respected Vice Chancellor, Professor Tankeshwar Kumar Sir, Dean of the School of Engineering and Technology, Dr. Phool Singh Sir, Head of Electrical Engineering, Dr. Rajesh Sir, today's eminent speaker, Professor J.S. Sir, respected professors, faculty members and all the participants. I, Priya Sharma, from 3rd year of Electrical Engineering, welcoming you all. It gives me immense pleasure to extend to you a very warm welcome on the behalf of Department of Electrical Engineering of Central University of Haryana, who has clubbed all of us together on the expert lecture for the what, why and how of research. The expert lecture shall dwell upon issues pertaining to those who are inching towards research and the ones looking forward to substantial up in their publications. The talk will be about following or move. The barriers of effectively doing research shall be identified. This talk will generate an ambience for looking at the stops that we impose on ourselves and stop short of producing tremendous results in research. There are many more things that will come forward, and for this I would like to invite Mr. Aditya Kumar, the student coordinator of the event from 3rd year of Electrical Engineering, to introduce our prominent speaker of today, Professor J.S. Saini sir, to know much more interesting things about research. Thank you. Good morning, everyone. Good morning, everyone. I am Aditya Kumar, student coordinator of this event from 3rd year of Department of Electrical Engineering, Central University of Haryana. So it is a great pleasure for me to introduce our today's speaker, who is going to give a lecture on the what, why and how of research. So today we have Professor J.S. Saini sir, who is presently an honorary adjunct professor at the North Camp University, Gurugram. Prior to this, he was a professor at Electrical Engineering Department, Dean Bandhu Chotu Ram University of Science and Technology, Murthal, Sonipat. He did his MTech and PhD from IIT New Delhi. During his PhD, he had publications in IEEE Journal, 5 international conferences, 2 national journals, 1 national conference papers published during his PhD itself. He was awarded High Quality Presentation Award for a research paper, awarded Gold Medal for Best All-Round Student Award winner for 4-year all-round performance in btech, awarded National Builder Award 2015, awarded Teachers Appreciation Award, referee IEEE Journal and IEEE Conferences, Journal of Applied Energy and Social Energy. He has total of 35 years of experience. He was a chairman of various departments like Electrical Engineering, ECE, CSC and Biomedical Engineering. He has also served as Dean of Colleges for 3.5 years. He has about 35 papers published in peer-reviewed journals and approx 70 papers published in international, national, seminar, conferences and proceedings. He also rendered mentorship for NBA, NAT for Electrical Engineering Department, College of Engineering, Govind Ballabh Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, Uttarakhand. The North Camp University, Gurugram, Electrical Engineering Department, Bhai Gurdas Institute of Engineering and Technology, Sangrur, Punjab, Panipat Institute of Engineering and Technology, Samlakha, Panipat. He taught more than 22 btech courses and 5 MTech courses. He guided 10 PhDs and approx 51 MTech dissertations. He conducted 10 short courses as a general chair, coordinator, convener, and delivered 80 expert lectures. Now we will look about his contribution to society. He is a convener of 4 different STCs under Service to Community and Economy. And he delivered several expert lectures ranging from 1 to 5 hours to youth and mixed audience. He has designed syllabi of approx 15 new courses in emerging areas of engineering and technology,
of approx 15 courses for MTech in Instrumentation and Control. He was a group coordinator of electrical engineering in state level conference of Vice Chancellor and Director Principals of Tech Institute for Curriculum Revision at CII Chandigarh and redesigned entire curriculum of approx 40 subjects. He published books, reviewed and contributed 8 chapters, and drafted lab manuals. He got several projects to his credit, like rupees 4 lakh of research and development project on neurophagy techniques in prediction and control of chaotic systems, rupees 12 lakh modernization and removal of obsolescence project on modernization of control and drive labs, rupees 6 lakhs research promotion scheme project on genetic algorithm and applications, 3 more sponsored projects, 2 by Himachal Pradesh government and 1 by Department of Science and Technology, New Delhi. He was a selection committee chairman member for assistant professor, associate professors of director for different state and central universities, including Deen Bandhu Chotu Ram University of Science and Technology. He was a trainee engineer in Punjab National Fertilizer and Chemical Limited, Nayanangal, Punjab. Professor in electrical engineering at Engg, New Delhi. Senior scientific officer 2 at IIT New Delhi. Assistant professor at NIT Jalandhar, Punjab, and assistant professor at Gyani Singh College of Engineering and Technology. So I would like to invite our today's expert, Professor Saini sir, for his guidance. Please, sir. Dr. Rajesh, Dubey, Chairman of Electrical Engineering Department. Mrs. Kumar, the Communication Coordinator for this program. Dr. Manish Manas, who couldn't make it because of some health issues with him. The student volunteers, Aditya, Priya, Shubham, Muzakkir, Azam, Faizan and Shaila. And all participants, thank you very much for making it to this place, and welcome all of you to this session. This session is actually primarily designed for those who, as mentioned in the introduction also, who are inching towards the research or are already undertaking research. But I find that many of the faces are from btech. Doesn't matter. They'll also get something out of this seminar. They just need to extend certain concepts to their domain, and possibly they'll also stand benefited. So my promise to all of you is that the time you are going to invest here will be worth the name. Okay? Let's go to the slides. The content says you can have access. Contents. Let's have a look at the contents. Just have a snapshot of the concept, contents that we'll go through. Next slide. Hope you are able to perceive it in one go. Next. I'm not reading because possibly you can scan it faster.
Let us look at how our brain is wired. Fundamentally, it's a very complex structure, but a very simplified model of the brain would be something like a sloping roof. So the rainfall falls on the sloping roof. Where goes the rain? Goes away. It doesn't store. Same is true with brain also. Whatever comes to the brain, it forgets also. The elasticity, plasticity dilemma of the brain is a hot topic in neural networks. We already know it. And plasticity of brain, the forgetting ability of the brain is a blessing also, as we'll learn later during this seminar itself. So, unless you create a mechanism here to retain the water, it will not be retained. All that I want to say is that you need to scribble something down on a piece of paper, maybe some keywords, such that you retain something out of this seminar. Will you do that? All of you have the copies? Yes, sir. Those who don't, they can fetch certain pages from here. Certain pages are available, blank pages are available, you can get those. Next, please. Let me ask you 2 questions. Please settle down quickly. जल्दी से बैठ जाएं. आगे कुछ सीट्स खाली हैं यहाँ. आप जो लास्ट बेंचर्स हैं इधर आ जाएं. पीछे के बच्चे इधर आ जाओ. इधर 2 रो खाली है. लास्ट बेंचर्स. आ जाओ आप आगे आ जाओ. आगे आ जाओ. आप लोग लेट कैसे हो गए? How did it happen? Yes, couple of people coming late. 11 बजे का टाइम था ना? बस लेट हो गई. तो बस में पहली दफा आए होंगे आप शायद. पहले बस कभी लेट नहीं हुई. You live in India. और आपको मालूम है कि इंडिया में ऐसा होता है. So make your design such that you reach on time. मैं भी तो आ ही गया. मैं मुरथल से आ रहा हूँ. बैठिए. See, what is lost in your absence, the conversation which is lost in your absence is making you feel at ease. You are not at ease with the seminar because something has already been said. And in that context, certain more things are being said and you don't receive the entire thing. ये दिक्कत होती है. समझ रहे ना? So making it on time is very essential. Either you don't attend or you attend it fully. Don't be fence sitters. आइए, आप भी आइए. आपको भी you are from which branch? Electrical. Huh? Electrical. Please sit down, settle. Settle down quickly. जल्दी बैठे. Let me ask you 2 questions. Have you ever seen water climbing up the stairs? कोई सिचुएशन आपने ऐसा देखा होगा पानी ऊपर चढ़ रहा है सीढ़ियाँ, पानी तो नीचे आता है. Have you ever seen a horse going to water? Yes, sir. Yes. Have you ever seen water going to the horse? मुझे पी लो, ऐसे पानी चढ़ के जा रहा है. ऐसा तो नहीं होता ना. The intention of bringing you to confront these questions is to make you aware
that there is a role of humility and appreciation while learning. In fact, there are two brain hemispheres, and the learning happens more profoundly if both the hemispheres of the brain are involved in the learning process. One of the hemispheres of the brain attends to this kind of things like appreciation, empathy, sympathy, appreciating, valuing. So that hemisphere is supposing I have a very heavy bucket to pick up. If I pick it with one hand, is that more appropriate? Or if I pick it with both the hands, that's more appropriate. Load sharing will be better if I employ both the hands, isn't it? In the same manner, in the same way, learning is more profound if you involve both the halves of the brain. So that you have to be humble and appreciative. So आप सब लोग ये सस्पेंड करते हैं, अपनी नोशन दिमाग से निकाल दें कि ये विज्ञान से इंसान हमें कुछ सिखा के जा सकता है आज. You need to be humble during this process of this education. Next. Now, I am not convinced, let us say, as to why should we undertake research. What is your take on the matter? आपका क्या कहना है? What did you say in defense of doing a research? Supposing I am not convinced, now you convince me as to why should we undertake research. Yes, what did you say? What's your take on the matter? Any thoughts? Why is research important for us? I have listed a couple of points. It gives solutions to problems, n number of problems. You conceive of any problem and if you undertake a research thereon, you get a solution sooner or later. That's one. Secondly, it's a way forward to promotions. Our promotion hierarchy is so net that if we produce a certain number of research papers, citations, quality papers, so on and so forth, we get promoted. That's true. That's how the system is designed. Then it strengthens the muscles of the brain. Brain is also a muscle. There's a lot of protein and fat in the brain. And that is strengthened. Mental sinews are strengthened if you are undertaking research, and that can help us in grasping the nitty-gritty of other subjects as well. If we are strengthening, let us say, through weight training, it's not that only weights we can pick up. We can undertake other strenuous tasks also thereby. So this is the way. Next, it brings freshness to the teaching process. Because one who is undertaking research, he is exposed to new areas, new domains, all through. So he can pick up some examples from those new domains and bring into the teaching process. And thereby, the teaching will never go stale. It will be all the time fresh because new examples he will be able to construct online. While teaching also, he will be able to construct new examples. Then, making a career. Some people, as in DRDO for example, they make a career through research only. There is no teaching they have to undertake. There is nothing of a production going to be done by them. They have to do research, and that makes them career also. So these are a couple of examples which should suffice to motivate you. Does it suffice? ठीक है, आपके लिए कुछ मोटिवेशन बन रहा है इससे? बीटेक वालों के लिए मैंने पहले कहा कि those who are btechers, they will also stand to have some benefit out of this seminar. This is my promise, and it will come through as we go ahead. Next, let's look at the components of research process. What is it? मोटे तौर पे देखते हैं पहले. Next, you need to select a broad area. Now, many of us commit the mistake of finding out a topic. कि मुझे टॉपिक सर दे दो, किस पे काम करना है. टीचर के पास जाके या गाइड के पास जाके ये बोलते हैं. This is a wrong question because the guide himself doesn't have a topic as of now. The topic is evolved
over a period of time, through discussions, through survey, and through a lot of hard work, the topic comes up. So it's essentially the broad area of research which is to be delineated, which is to be earmarked, broad area of research, because as of now, we don't know in which particular domain the research will proceed. अभी ये मालूम ही नहीं है. Actually, the journey is into an uncharted domain. It's not known where to reach. वहाँ पहुँचना है, यहाँ पहुँचना है, ये मालूम नहीं होता है research. Alright? The journey is into an uncharted domain. So we only select a broad area first. Then we undertake a literature survey which amounts to say, let me take a couple of papers which are not entirely disjoint papers. They are connected papers related to each other and they are of a particular domain. Okay. Of that domain we undertake certain survey, intensive survey. Survey कैसे करते हैं इसको बाद में देखेंगे. Then there is the development of working hypothesis, and which leads to problem formulation. Actually, the purpose of survey is to formulate a problem. ना ये थोड़ा सा ऐसे लगता है बीटेक वालों को खास करके ऐसे लगेगा कि प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करना है. क्या प्रॉब्लम तो पहले तो कम नहीं है दुनिया में, एक और प्रॉब्लम बनाओ, ये क्या हुआ? वैसा लगता है बीटेक को. मुझे भी ऐसा लगता था जब मैं बीटेक कर रहा था. एक दफा हमारे एक्चुअली थे, वो पीएचडी थे और मैं बीटेक था. उन्होंने कोई टॉक किया तो बोले प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन. मैंने कहा ये और नई चीज आ गई, प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करो. प्रॉब्लम तो पहले ही बहुत है. तो प्रॉब्लम फॉर्मुलेट करने का मतलब है कि वो प्रॉब्लम कल को आ सकती है, आज हम उसको ढूंढ रहे हैं और उसका सॉल्यूशन भी करेंगे. In this context we should perceive it. तो उसके बाद रिसर्च डिजाइन बनाया जाएगा, बिकॉज रैंडमली कुछ नहीं होगा. A monkey sitting on a keyboard will not be able to produce Shakespeare's novels. शेक्सपियर ने जो नॉवल लिखे थे उसमें हर एक कैरेक्टर को घड़ा था, हर एक प्लॉट को बनाया था उसने बड़ी मेहनत से. तो एक मंकी अगर कीबोर्ड पे बैठ के ऐसे हिट करना लग जाए रैंडमली, तो शेक्सपियर का नॉवल तो नहीं बन सकता. तो रैंडमली कुछ नहीं होता. हालांकि रैंडमनेस का अपना एक फायदा है, वो हम थोड़ा सा बाद में बताएंगे. रैंडमनेस का फायदा क्या है, we'll come to that also. But as of now, we perceive it that something has to be designed to elicit something. कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ डिजाइन के जरिए पास होना पड़ेगा. So what is that entire strategy of carrying out research is called the research and design. Also called conceptual framework. अब ये बहुत बड़ा हो सकता है conceptual framework. उसमें से फिर कुछ सैंपल पिक करने होंगे. यहाँ कुछ रिसर्च ऐसा भी होता है जो क्वेश्चनेयर्स के आधार पे होता है. क्वेश्चन बनाए जाते हैं, मार्केट में क्वेश्चन दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स को क्वेश्चन दिए जाते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनका एनालिसिस करके उसके स्टैटिस्टिकल कुछ मैट्रिक्स ढूंढे जाते हैं. इस तरह से भी किया जाता है. So this is towards that. And if you are undertaking some experimental work, you will be making out a pilot plan, or you will be working with some jigs already available in the laboratory, some kits already working, some operators already in the laboratory. तो उससे भी कर सकते हो अगर एक्सपेरिमेंटल काम है. तो क्विक एंड अप्रोक्सीमेट स्टडी करने के लिए so much so you can even design models. What is a model? Model is not the actual thing. It is a replica of the actual thing, either on a smaller scale and capturing or subsuming the properties of the actual thing. Model. And model need not necessarily be in hardware. It could be through equations, transfer functions, differential equations, difference equations, and all that. Then the hypothesis, you had hypothesized something. Hypothesis means as of now we don't know whether it's true or not. तो कुछ hypothesize करेंगे, उसकी फिर टेस्टिंग चलेगी. इस फेज में टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, and then as we test it we analyze it and do interpretation of the results also. The interpretation could be carried out statistically also,
if lot of data is involved, you have to go through statistical tools also. Then you need to generalize, make certain conclusions, and also forward the field with a couple of future directions. Which future directions we देनी होगी. And then finally you prepare a report, publish, or you do patenting. So this is the entire research process. मोटे तौर पे अभी हम nitty-gritty में नहीं गए. Okay? Next. The steps that we have outlined above in the above figure, they are not exhaustive. Exhaustive का मतलब यह है कि वो complete list नहीं है. उसमें एक आध चीज कहीं और ऐड कर सकते हैं, डोमेन स्पेसिफिक. किसी डोमेन में हो सकता है कि कुछ और भी कॉल्ड फॉर हो, वो भी करना है. जब किसी डोमेन में कुछ ना कॉल्ड फॉर हो तो उसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा. Is that all right? So exhaustive नहीं है लिस्ट वो. Number one. Secondly, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव स्टेप्स नहीं है. एक नहीं कि एक हो रहा तो दूसरा नहीं होगा. दो स्टेप्स इकट्ठे भी चल सकते हैं. जैसे सर्वे भी चल रहा है और साथ साथ कुछ प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन भी चल रहा है और साथ साथ कुछ सिमुलेशन भी चल रहा है. ऐसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है ये स्टेप्स. सीरीज ऑफ क्लोजली रिलेटेड, कंटिन्यूअसली ओवरलैपिंग, इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे को डिपेंडेंट तो है ही, और साथ में नॉन लीनियर स्टेप्स भी हैं. नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है? गिवन एन इनपुट आउटपुट ज्यादा भी आ सकता है, गिवन एन इनपुट आउटपुट कम भी आ सकता है. There is no straight line relationship between the input and output. That's called non-linear. Okay? कभी हो सकता है आप एफर्ट कम करें, एग्जाम में नंबर ज्यादा आ जाए, और कभी आप एफर्ट ज्यादा करें, एग्जाम में नंबर कम आ जाए. तो लाइफ इज एसेंशियली non-linear. लाइफ में भी ऐसा होगा. What lies ahead is a pleasure of the hunt or chase. क्योंकि आपको चेस करना है कुछ ऑब्जेक्टिव, और ऑब्जेक्टिव अननोन भी रहता है, अनसर्टेनिटी भी रहती है उस ऑब्जेक्टिव के बारे में. तो वो एक प्लेजर रहता है उसको चेस जब तक करते हो. कहते हैं ना, फॉरबिडन फ्रूट्स आर स्वीट. अमरूद अगर पेड़ पे लगे हैं और हमें तोड़ने नहीं दिया जा रहा, हम तोड़ रहे हैं, तो बड़ा मजा आता है. ठीक है नहीं? ऐसा होता है, बचपन में देखा होगा, दौड़ दौड़ के अमरूद हम तोड़ा करते थे, फिर कुत्ते पड़ जाते थे पीछे, जब लाठी लेके वो किसान आ जाता है हमें चेस करने के लिए. That's a chase. What lies ahead is a pleasure, some frustration, some satisfaction. कुछ हो रहा था, satisfaction हो रही है, नहीं हो रहा था, लगता है क्विट कर जाए. ऐसा होता है. It's a typical field like this. Some confusion, समझ नहीं आ रहा है, बड़ी uncertainty है, कहाँ जा रहा है, ये नहीं पता है. It's very uncertain. Reignation, और फिर लगता है यार बाकी लोग तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ. फिर हम रीइग्नाइट करते हैं, फिर काम चल पड़ता है. कुछ महीने काम चलेगा, फिर थक जाते हैं. ऐसा होता है. And hope and a confidence at the end that everything will make it a full circle. ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए, और होता भी है, धीरे धीरे डेवलप होता है. There is the end it will make a full circle. सक्सेस मिलेगा, ये कॉन्फिडेंस रहना चाहिए. Now let us expose you to a story. A disciple goes to a master trainer, master karate trainer, and requests him that he should be taken as a disciple by the master. The master is a masterly figure. He doesn't normally, take ordinary people into his discipleship. So he doesn't relent immediately, but the disciple persists. तो जोर देके कहता है कि नहीं, मुझे ट्रेनिंग लेनी, तो आपके अंदर ही ट्रेनिंग ले. So then finally the master accepts on the condition that every instruction will be followed as he says. In word and spirit, every instruction will be followed. The disciple agrees, and he is then undertaken by the master, under his discipleship. What happens is that the master subjects him to all sorts of menial tasks. उसको कहता है झाड़ू पोछा करो, मेरे घर में कली कर दो, मेरी कार साफ कर दो, something like this, menial tasks, ordinary tasks, but nothing of karate training. Karate की training नहीं दी जाती उसको. The disciple, he was determined as he was
He undertakes every work with uncanny veracity and tenacity. Tenacity means sticking to the objective. Uncanny means extraordinarily. Veracity means truthfulness. तो बहुत श्रद्धा से, बहुत आत्मीयता से, बहुत ही मन से वो सब कुछ करता रहता है जो भी उसका मास्टर उसको बोलता है. And this goes on and on for weeks. कई हफ्ते ऐसा चलता रहता है, but there is nothing of a training called karate. Next. Then one fine morning, the disciple breaks down, उसका हौसला पस्त हो जाता है, and he wants to run away. तो कहता मैं उसने जो रिबन बांधा होता है डिसाइपलशिप का रिबन फेंकता है नीचे और बाल्टी बुल्टी उसको लात मारता है और कहता मैं जा रहा हूँ. Immediately, the master confronts the trainer with a punch. Immediately, he gives him a punch. And what happens? Out of the body of the disciple also come a couple of punches in defense. जैसे उसको पंच मिलता है डिसाइपल को, तो डिसाइपल से भी पंच ही छूटते हैं in defense thereof. Couple of more punches by the master, and all of them are met with the alacrity of a trained karate player. All the punches are counteracted by the disciple as if he has been duly trained in karate. Now you tell me as to how did it happen? Never ever he was trained in karate. All that he was subjected to was menial tasks. तो आप अपनी कॉपी पे एक लाइन का कमेंट लिखें. Put a comment on your copy. How did it happen? Pretty strange. He was never ever trained in karate, and yet when the occasion came, he was able to deliver punches of karate style as it is has been duly trained in karate. तो आपका क्या कमेंट है, क्या निष्कर्ष है, क्या डिफरेंस है, क्या सोचने ऐसे कैसे? तो ये कराटे की ट्रेनिंग तो नहीं मिली, पहले भी तो one line or two lines of comment. Who likes to share as to what happened during the course of interaction between the character player and the master? The disciple and master, what happened between them? No formal training of karate was given, but when the occasion demanded, he was able to protect himself through trained style karate punches. Yes, who likes to share? Raise your hands. Trust yourself, what are you doing, or trust yourself. It doesn't matter, you will fail or pass in your particular work. Please sit down. Anybody else? Yeah? Somebody there wanted to say something. सर जो आपने सवाल पूछा था कि कैसे मैंने मास्टर को एडजस्ट किया और वो उसके थोड़े में बहुत थे जो मास्टर को दिए थे वो पास आउट नहीं हुए वो ही इसका एक सेक्शन था सर वो ही? सर एक सेक्शन था वो सामने आया. Okay. Any others? Sir, he get his self introspect कि that is he is only the person जो खुद ही सीख सकता है. Up to that point he reach he introspect. Please do. Sir, because the body has been given
going to be restricted to the actual knowledge of the karate. But अगर उसे शायद पहले ही ये सब बता दे तो वो एक zeal of learning में भी reduce हो सकती है। इसलिए उसने वो ना बताकर उसका zeal को use करा और उसे works देता रहा, उसको ना बताया कि वो अच्छी कराटे सीख रहा है इसलिए। जब बाद में उसे पता चला तो Thank you. Sir, undergoing the same task repeatedly made his muscle memory fine-tuned to the actions that he has to perform while counteracting any karate move that has been performed on himself. So, when his master struck him, it wasn't him that acted, it was his muscle memory that just triggered him to raise his fist and block the punch. Please sir, now. Anybody else? Equivalent. But what did it happen? Actually, what process prevailed? No, I don't know equivalent fully. You teach me, what is equivalent? दो साल. Okay. But what was the process that happened? Actually, देश तो रहा नहीं था, तो उसको क्या था मेरी कार साफ करनी है, बट जो क्लीनिंग करनी है कार की वो पर्टिकुलर स्ट्रोक्स में करनी है. Every instruction was, with a specific outline. कैसे करना है? सर मास्टर ने जो प्लान मतलब जो गोल डिजाइन किया था वो इस तरह था कि वो सीख गया. Okay. Anybody else? Okay. So what happens? What actually happened was that the menial tasks that were given by the master, they had embedded in those tasks the moves of karate. उसने कहा था कि गाड़ी साफ करनी है तो स्पेसिफिक स्ट्रोक्स से करनी है, घर साफ करना है तो स्पेसिफिक स्ट्रोक्स से करना है, घर पर रैंडमली ऐसे नहीं साफ कर देना. So वो स्ट्रोक्स जो कराटे के स्ट्रोक्स थे उसने उन menial tasks में एम्बेड कर रखे थे, and all the time he was going through those tasks. तो वो कराटे की ट्रेनिंग हो रही थी as a matter of fact. And when the occasion came, he rose up to the occasion and he delivered those karate punches back. ऐसा हुआ. Alright. Actually, this story I am bringing forth for your consideration is that you need to have faith on your guide. If it is a guide of stature, if he is a guide of metal, कुछ उसका stature है, metal है, he must have had the experience of guiding number of students and taking them to the right path and finally to the success point. He already has that experience. So if he is telling you study topology, you should study topology no matter whether topology seems relevant to you or not. If he tells you study this Laplace transform or Z transform, to you it appears irrelevant, but study it. Because he knows that this is the foundation on which I am going to lay something more. Isn't it? So that's the intention of bringing forth this story to you. Now consider these two viewpoints. ये viewpoint है, इनको एक कोट की तरह किसी हैंगर पे टांग सकते हो अगर viewpoint आपको पसंद नहीं आते हैं. कोट उतारा और हैंगर पे टांग दिया, वहाँ पे खूंटी पे टांग दिया. Alright, can you do that? Let's consider them first. Life is not a personal possession. It is a racial heritage that we receive for use and development. अब कुछ लोग कहते हैं कि लाइफ तो मेरी है, पर्सनल है ये तो मेरी लाइफ है, मैं जानता हूँ कैसे डील करना लाइफ के साथ. I know how to live life. What do you know about my life? मुझे पता है क्या दुख है लाइफ में. आपको क्या पता मेरे क्या दुख रहे हैं? But consider this viewpoint, that life is not a personal possession, it's a racial heritage, means पीछे से आपको प्रदान हुआ और आगे आप प्रदान करना कुछ में ऐसे चलती जाएगी. And in this process we are called upon to use it and develop it. That's the intention of life. Consider this viewpoint for a moment. तो समझ आए ये view, तो इसको छोड़ देना बाद में. The person you know yourself to be is not who you really are. जो आप सोचते हो कि हम हैं,
ऐसा जरूरी नहीं कि आप वही हैं। ये तो आपकी सोच है कि दिस इज योर स्टोरी अबाउट योरसेल्फ, कि मैं तो ऐसा ही हूँ, मुझे तो स्टेज पे जाके बोलना नहीं आता, आई कांट स्पीक अबाउट इन फ्रंट अबाउट 20 पीपल, मैं ऐसा ही हूँ। ये आपकी स्टोरी हो सकती है। यू कैन बिगिन टू एग्जिस्ट अदरवाइज आल्सो। At any moment you have a choice about who you are being. किसी भी समय पे आपके हाथ में ये चॉइस हो सकती है और आप एक्सरसाइज कर सकते हो उस चॉइस को कि मैंने कुछ और तरह से विचरण होना है मेरा। I can behave in a different manner. By the way, आपको मालूम है कि यूनिवर्स कब स्टार्ट हुआ था? यूनिवर्स जिसमें हमारा एग्जिस्टेंस है, एंटायर यूनिवर्स, व्हेन डिड इट स्टार्ट? ये शुरू कब हुआ? कहां से शुरू हुआ? कितना था पहले? भाई जी ये मालूम है कि कहां तक पहुंच गया ये? इसके शोर मालूम है? एंड वहां तक कह दी तो 11 के बाद यूनिवर्स खत्म हो जाता है, जब इधर बठिंडा के बाद खत्म, जाए दिल्ली के बाद खत्म हो जाता है, या इंग्लैंड के बाद खत्म। तो शोर मालूम है इसके कब स्टार्ट हुआ? नहीं मालूम। कहां तक फैला हुआ? नहीं मालूम। ये फैलता ही जा रहा है, ये मालूम है? ये तो मालूम। तो नेचर इज एवर एक्सपेंडिंग। हाउ कम यू ए टाइनी फ्रैक्शन इन दिस एंटायर यूनिवर्स यू आर सेइंग कि मैं ऐसा ही हूं? नहीं, मैं तो एक्सपेंड करूंगा ही नहीं, मैं ठिकना सब ठिकना ही रहूंगा। I can't speak, therefore I will not speak. I didn't do research, therefore I will not do research. Research मेरे बस की नहीं है, studies मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि मैं तो प्राइवेट ऐसे सरकारी स्कूल में पढ़ा था और वहाँ पे ऐसा पढ़ाते ही नहीं थे। मेरे को है ही नहीं अब ब्रिंगिंग उस तरह की, मेरे पेरेंट्स ही ऐसे, मेरे को जीन्स ऐसे दिए गए, मेरे को टीचर भी ऐसे मिले। So this could be your story. At any moment you have a choice about who you are being. इस चॉइस को कंसिडर करें फॉर अ मोमेंट, तो समझ नहीं आएगा तो कोट की तरह खूंटी पे टांग देना इसको, कॉन्सेप्ट को। फिलहाल इस कॉन्सेप्ट को बोरो करके रख लें कुछ देर के लिए। You are not limited to the person you wound up being. You are not limited to the person you wound up being, the person you think you are. You actually wound up being so in response to circumstances. Circumstances ने आपको घड़ घड़ के थपेड़े मार के इधर से थोड़े मार के ऐसा बना दिया। You actually are not so. You could happen to be otherwise also. Perhaps circumstances अलग होते तो शायद आप और अलग हो जाते, ऐसा होता। You can create a way of being for yourself that currently would be unrecognizable. हो सकता है कि आपके लिए ऐसा समझ पाना मुश्किल हो, अभी धुंधला सा दिख रहा हो कि मैं क्या बन सकता हूँ। आज आप बोल नहीं रहे हो स्टेज पे जाके, कल को हो सकता है बोलने लग जाए। आज आप अच्छे रिसर्चर नहीं हो, कल को हो सकता है फंडामेंटली बहुत बढ़िया रिसर्च कर डालें, ऐसा हो सकता है। And have that way of being authentically who you are. Authentically means not in response to circumstances, but by way of your personality upbringing, by yourself. Say, you can pick up optimism from nothing, nowhere, but just from air also. Out of nothingness also you can pick up happiness. Can you? बैठे बैठे खुश हो सकते हो क्या? खुश होके दिखाना जरा। अभी वैसे हंसी आ रही है आपके चेहरों में, कितनी बड़ी हंसी आ रही है। मैंने तो आपको टॉफी भी नहीं दी, चॉकलेट भी नहीं दिया, कुछ भी नहीं दिया। So out of nothingness also you can create something, and out of nothingness you can pick up optimism. When everything is going haywire, still you can be hopeful.
ऐसा देखा गया है, ऐसा प्रमाणित हुआ है, लोगों ने करके दिखाया है। ऐसा बहुत सारे लोगों ने करके दिखाया कि रिक्शा चला रहा है फिर भी आईएएस का एग्जाम देके पास कर रहा है, ऐसा भी पाया गया। The person you currently know yourself to be or currently are, जो आप सोचते हो कि मैं हूं ऐसा, या जो आप अभी हो, is only a way of being. It's not the way of being. सिर्फ एक तरीका है वो तो विचरण होने का, इससे भिन्न आप हो सकते हैं, इससे भिन्न हो सकते हैं। Under any circumstances and at all times, you can create a way of being that gives you power, full self-expression and freedom right now in the present. No matter what exists outside, because the transformation will take place here and inside. Internalization. Nothing will come outside. School वही रहेंगे, टीचर वही रहेंगे, माँ बाप वही रहेंगे, वाइस चांसलर वही रहेंगे, दुबे साहब वही रहेंगे. Saini will continue to be the same. Still, you can make it. No matter what happens outside is immaterial. Consider this as a possibility. A possibility इसी का नाम है. Possibility comes up from thought. And once you work on the possibility consistently for 6 months or so, it actually translates into a reality. Possibility पहले लैंग्वेज में होती है, फिर प्रोडक्ट्स में आ जाती है. You can touch those products, you can handle those products. It's like this. So let's take a small break now. The break is again of a very novel kind. You have to stand up, stretch yourself and sit down. You don't have to go outside. In stretching, take care of the proceed. जैसे ये पूरी नहीं मार देनी हो, पिछला सारा गुस्सा निकाल देना. So far? Any questions? Or any comment? Any editing? Anything to add on? Alright, we move on to the next phase of the seminar. What is the fundamental design of human beings? Human beings are fundamentally wired, hardwired to be resigned and cynical. Fundamentally, they are not designed to be optimistic. Zyadatar, almost invariably, people are designed to be cynical and resigned. Resigned means surrendered to fate. I've given a small meaning here. Resigned to fate means के जैसा होगा देखा जाएगा, किस्मत जो आएगी मेरे भाग्य में जो लिखा मुझे मिल जाएगा. That's resigned. And cynical means a pessimist who believes that others' actions are bad. ज़्यादातर
लोगों को लगता है कि उसके मोटिव ठीक नहीं है, उसका मोटिव ठीक नहीं है, उसका मोटिव ठीक नहीं है, और मेरे प्रति उसका मोटिव गलत है. Many times you perceive it like this. This is a fundamental design of human beings. There is no future is another notion that comes up. दुनिया गर्त में जा रही है. इंडिया में इतना करप्शन हो रहा है, पूरी दुनिया में इतना करप्शन हो रहा है, भूखमरी फैल रही है, ये हो रहा वो हो रहा है. क्या फ्यूचर है? कोई फ्यूचर नहीं. और there is another notion that there is almost certain a future. कुछ लोग ये भी कहते हैं ये दुनिया तो ये खत्म हो जाएगी 12 साल में. दे प्रोफेसी we make certain prophecies also. There is almost certain a future. ऐसा ही बच जाएगा बस, और वो गर्त में जाएगा, something like that. Negative feeling they have attention. But paradoxically, there is some sense कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर फूटती है हर एक के दिमाग के अंदर कि something is possible. पर वो चिंगारी तब फूटती है जब हम एसोसिएट करते हैं साथ में कि अगर ये हो जाए, राइट कंडीशंस मिल जाए, मुझे इतनी दौलत मिल जाए, मेरा ऐसा अपब्रिंगिंग हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो फिर मैं ये कर सकता हूँ. ऐसा दिमाग में जरूर चलता है. किसी कोने में समटाइम्स ऐसा आता है कि अगर ऐसा हो जाए तो फिर देखो मैं क्या कर सकता हूँ. समथिंग लाइक इट कम्स, यू नो, समटाइम्स इट कम्स टू माइंड आल्सो. सो गिवन द राइट कंडीशंस इन फाइनाइट टाइम एंड इनफाइनाइट रिसोर्सेज, तो क्या बात है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ. इनफाइनाइट टाइम दे दिया जाए मेरे डिस्पोजल में, कई सारी लाइफ्स दे दी जाए, और बहुत सारे धन दे दिया जाए, अनलिमिटेड रिसोर्सेज दे दिया जाए, कैन डू एनीथिंग दैट आई वांट. The fundamental question is what stuff we are made of. Are we a mere meat bag? ये मांस के बस बोथड़े हैं हम, जाके हड्डियों के पिंजर हैं. Who or what has made us whatever we are? तो ये मेरा सबसे क्वेश्चन है कि हम जो भी आज हम हैं, बने हैं, जिस तरह से भी बने हैं, इसको किसने बनाया? The who has been responsible for making the way we are today? So shoot a couple of questions to a couple of your answers, and I'll keep noting down here. Speak out. Whatever you are, who has made you like that? Evolution. Evolution. Okay. So, हम खुद What? our upbringing. 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 Okay. So the atmosphere in which we live. Pardon? The atmosphere in which we live. Atmosphere. When I say environment, next. It is ourselves that we are. Ourselves. What more? The society. 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 Okay. What more? What more? Speak out something, everybody. The future. Future. Are you sure? Future. आज जो आज आप है, इस फ्यूचर ने बना दिया. Fate ने बना दिया. फ्यूचर बनाने के लिए आज आए हैं. नहीं, वो तो आज आए. मैं कह रहा हूँ जो आज आप हो, ये किसने बनाया आपको? Who has been responsible for bringing up you to this level? आपकी जो पर्सनैलिटी आज है, बॉडी है, दिमाग है, सारा कुछ है, जो भी आपका लेवल है,
That is the hunger to made ourselves better from past. Wrong. Yes, sir. Once again. Sir, it is our hunger. Hunger. Yes, that made us. Urge to learn. Curiosity. Yes, sir. Okay. What more? Motivation. More? Motivation. Motivation. What more? What बताइए? Sir, one I want to add like a need. Whatever need we have a need of wearing the clothes. That's why we are like wearing. A need to like. Got it. Who else? Circumstances. और कुछ? Education. और कुछ? Acknowledgement. Acknowledge. और All of these. So, let us see my list. Parents, teachers, friends, peers, education, family background, financial status, guidance, hard work, genes, circumstances, determination, willpower, encouragement, laziness. Laziness पे responsible है हमारे. Carelessness, thoughts, and children also dictate. कोई आप में से शादीशुदा कितने लोग हैं? बच्चे कितने लोगों के हैं? बच्चे आपको बनाते हैं कुछ? पापा ये चीज ला के दो नहीं तो शाम को घर आना। तो ये सब हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है। Next. The whole gamut of entities can be clubbed up into one entity and that is past. ये सब हमें कहाँ से मिला? Past. How many of you agree with it? कि ये पास्ट से मिला हमें. पास्ट में ऐसा हो रहा था हमारे साथ. बच्चे ऐसे थे, टीचर ऐसे थे, एजुकेशन ऐसी थी, पीयर्स, विल पावर, लेजीनेस इतनी थी मेरी तो ऐसा बन गया. Isn't it? The entire thing has come from the past. Do you agree? Let us consider a radically different viewpoint. Building on the foundation of the past is so fundamental that it's difficult to perceive any reality different from that. As a matter of fact, ये सोच पाना मुश्किल होता हमारे लिए कि पास्ट से भिन्न कुछ और हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज तो पास्ट से आ रही है. एजुकेशन पास्ट में, पेरेंट्स पास्ट में, सब कुछ तो पास्ट में जो जो जुड़ता गया उसका सम टोटल आज बन के जो भी है. Isn't that? तो ये सोच पाना ही मुश्किल है, इमेजिन करना है कि रियलिटी डिफरेंट फ्रॉम पास्ट. बट दिस व्यू, ये जो पास्ट वाला व्यू है, दिस कैन लीड अस टू ए प्रेडिक्टेबल फ्यूचर, नॉट टू ए पॉसिबिलिस्टिक फ्यूचर. कि अगर ऐसा पास्ट में था तो ऐसा होगा, प्रेडिक्शन कर सकते हैं उसके बारे में. अगर हमने इस व्यू को होल्ड किया है कि पास्ट हमारे लिए रिस्पॉन्सिबल है, तब इसमें एक नया फ्यूचर कास्ट करने की संभावना नहीं उठती है, नहीं उत्पन्न होती है, क्योंकि हम मान रहे हैं कि पास्ट हैज लेड अस टू दिस एंड देयरफॉर वी कैन मेक ए प्रेडिक्शन कि हम वहां पहुंचेंगे. अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो नेचुरली आई कैन मेक ए प्रेडिक्शन के मैं नीचे फर्दर जाऊंगा. अगर मैं ऐसे जा रहा हूं तो आई कैन मेक ए प्रेडिक्शन के ऊपर जाऊंगा. फ्रॉम द स्लोप आई कैन मेक आउट. So, this view can at best lead us to a predictable future, not to a possibilistic future. कुछ और possibility invent कर लेना ये संभव नहीं दिखता. But let life in the present, ये proposition है. Life in the present, let it not be just a variant of the past. Let it be not just better variant or a different variant of the past, लेकिन उससे कहीं हट करके एक अलग लाइफ बना दी जाए. ऐसा क्या संभव है, ऐसा क्या पॉसिबल है? So suppose living pathway works the very opposite way.
एक पावरफुल लाइफ जीना, एक सर्कमस्टांसेस के गुलाम बन के जीने की बजाय उनसे लड़ करके अलग से लाइफ को जीना, ऐसा कंसिडर कर सकते हैं. Consider a radically different viewpoint that it is not the past, rather it's a force from the future which pulls us. A force or a future that we envision for ourselves. जो फ्यूचर हम अपने लिए सोचते हैं कि ऐसा मैं बन जाऊंगा, वहां से इम्पीटस ड्रा करना और उसी से खींचे जाना ऐसा संभव है. ऐसा करने में the drag of the past we are able to relinquish. जो पास्ट का बोझा हमने उठाया हुआ बैगेज हेवी, वो हम छोड़ सकते हैं and we can fly on our wings to a future faster. इसलिए फ्यूचर से इम्पीटेसेस ड्राइव करना कि अगर मेरा एमटेक बढ़िया हो जाता है, अगर मेरा पीएचडी अच्छा हो जाता है, पब्लिकेशंस अच्छे हो जाते हैं, if you imagine, just now you are imagining and you are creating the possibility, अगर ऐसा हो जाता है, then obviously I'll get a good placement, I'll get a good job, अच्छी मेरी सेटलमेंट हो जाएगी, अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छा सब कुछ अच्छा होगा. So that's the future, the force of the future which resides for us. Next. As a matter of fact, this is not blah blah. What I have just stated is not blah blah, it is concretized, it's possible. And I have laid my hands onto linear systems theory or control system theory to make it perfectly available and convincing for you. As a matter of fact, all physical systems are causal in nature. Causal in the sense that their output depends on the past inputs or the present input. पीछे क्या हुआ, रेजिस्टेंस को क्या वोल्टेज मिली, उसके रिस्पांस में वो करंट प्रोड्यूस करेगा. इंडक्टर को पीछे क्या वोल्टेज मिली, अब क्या वोल्टेज मिली, उसके रिस्पांस में करंट प्रोड्यूस करेगा. कैपेसिटर के ऊपर पहले से क्या चार्ज था, अब और चार्ज क्या दे रहे हैं, क्या वोल्टेज दे रहे हैं, उसके रिस्पांस में वो फर्दर चार्ज शो करेगा या फर्दर करंट शो करेगा. This is how physical systems or dead systems behave, and they are called causal systems. On the other hand, चिमटी को देखें तो कल बारिश आने वाली है, फ्यूचर में बारिश आने वाली है. The ant will pick up that signal कि बारिश आने वाली है, it starts collecting food today itself. इराक को मालूम है कि अमेरिका मुझे स्ट्राइक करेगा, मैं अपनी फैसिलिटीज को सेफगार्ड कर लूं, पहले से सेफगार्ड करना शुरू कर देता है. So it picks up impetuses, it picks up, the calls from the future and takes action right now. So input हमें future में आना है, उसको अभी भी input consider करके output produce किया जाता है. This is how the human beings fundamentally are, because they are non-causal, they are anticipatory. All social systems, political systems, or systems made from human beings are essentially non-causal, or you can say anticipatory. Are you getting it? So, human beings are living species, you can say, they are all anticipatory in nature, non-causal. And once it is given to us that they are non-causal, how would it be कि अगर हम इस फीचर का ज़्यादा और अच्छे से एक्सप्लॉइट करें इसको, ऐसा कैसा रहेगा? Next slide. So once recognize that our future plays a significant role in our present. अगर ये पता लग गया हमें कि फ्यूचर का हमारी लाइफ में, आज की लाइफ में बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है, तो क्यों ना हम इसी क्वेश्चन को और थोड़ा अच्छे से ब्लो अप करें और अपने आप से पूछें कि फ्यूचर की और वो कौन सी चीजें जो आज हमें इंस्पायर करती हैं, और कौन सी चीजें फ्यूचर में जो आज हमें इंस्पायर करके हम बेटर एक्शन ले सकते हैं. So that would be more pragmatic a question, more practical a question. So it makes sense from a purely pragmatic means practical point of view to ask as to what more extensive, efficient and formal use
of our futuristic thinking may contribute to our better present. ऐसा हम पूछना शुरू करें अपने से कि और क्या हो सकता है फ्यूचर में जो आज हमें एनविसेज करके एक्शन लेने के लिए बाध्य कर दे। Are you getting? Actually, ये चीज एब्स्ट्रैक्ट ना बनी रहे, इस चीज को थोड़ा सा और प्रैक्टिकल शेप में देखने के लिए हम कंट्रोल सिस्टम्स का सहारा ले सकते हैं। कंट्रोल सिस्टम there is a derivative control which if applied is able to subside the oscillations. It is very इसको पता होगा कि oscillation आने वाला तो उसको पहले से उसके लिए स्पेसिफाई करना शुरू करना है। वहाँ से हमने इंटरेस्ट स्टार्ट किया कि anticipatory activity is useful for us. For instance, if we know कि कल हम बीमार पड़ सकते हैं और आज ही हम एक्सरसाइज करनी शुरू करते हैं, योगा भी करना शुरू करते हैं, बहुत सारे पूछोगे कि सर आप कैसे बीमार पड़े? कई से मेरा बीमार पड़ा था ऐसा नहीं है। तो how come I also got sick? इसमें मैं और 20 minutes स्टाफ नहीं था। कुछ लोग सोचते हैं कि ट्रीटमेंट आने से पहले ही उसने वैसे मर जाना सजा करेंगे, सजा मुक्के मारेंगे तो मुक्के मारने से पहले मर जाएगा। So anticipatory action controls each oscillation life oscillation. So अगर आपको पता हो कि सेमिनार बढ़िया कर रहा है तो ऐसी पहले क्यों नहीं ठीक करा लिया? होना ठीक है ना? एंटीस्पेक्टरी एक्टिविटी ये ऐसे खराब हो सकता तो पहले मुझे ध्यान देना है कैसे ठीक करा। अगर मुझे पता हो कि बस लेट हो सकती है तो मैं पहले ही चलूंगी कि 10 मिनट में उतने टाइम पे चलूंगी। एंटीस्पेक्टरी एक्टिविटी क्या होगी बताइए? वो उसकी तरफ देख रही है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, वही तो लेन आ रही थी। एंटीस्पेक्टरी एक्टिविटी क्या होगा? इतना बस में ले हमारा पहले ही चलूंगी, that would be wise, right? इस कर्व से क्लियर हो रहा सबको? जहाँ ऑसिलेशन ज्यादा है यहाँ पे, जहाँ ऑसिलेशन ज्यादा है ये विदाउट एनी प्रेशर, इसमें एंटीस्पेक्टरी एक्शन नहीं है, इसमें हमने एंटीस्पेक्टरी एक्शन लगाया। इसमें डेरिवेटिव एक्शन लगाया तो क्या हुआ? ऑसिलेशंस थोड़ी कम हो गई। लाइफ में भी ऐसा ही है, जो जो एंटीस्पेक्टरी एक्शन लेता जाएगा उसकी लाइफ स्मूथ रहेगी और जो सोया ही रहेगा उठेगा जब वो काम हो चुका होगा, सारा बिगड़ चुका होगा, फिर वो भागेगा एक्शन लेने के लिए, बस पकड़ने के लिए भागेगा, उसकी लाइफ स्मूथ नहीं चलेगी, फिर उसको यहाँ भी कुछ सुनना पड़ेगा। नेक्स्ट अब ये बहुत मुश्किल होता है पास्ट को छोड़ना, बिकॉज मैनी ऑफ अस हैव द नोशन कि इतना मैंने एक्सपीरियंस जुटाया। और यू हैव टू लिसन मी। Say, it's very difficult to quit the past and go to the future in deriving impetuses. Kyun? Because most often what we consider past, we also consider valuable. मेरा experience है, मेरा ये है, मेरा वो है. But many times we also see, simultaneously we can also see that what we call as our experience is nothing but a set of our follies. हमारी जो गलतियां होती हैं उनकी लिस्ट बनाई होती है हमने लाइफ में और उसको हम कहते हैं एक्सपीरियंस। ऐसा भी होता है। और एट बेस्ट इट कुड बी ए लॉन्ग लिस्ट ऑफ अदर फॉलीज, दूसरों के मिस्टेक्स की लिस्ट हो सकती है, उसको हम एक्सपीरियंस कह सकते हैं। Now can we design, create and design a future informed by the past? ऐसा नहीं कि पास्ट को ऐसे छोड़ देना है कि जो उसमें अच्छा अंश थे वो भी छोड़ देने हैं। So informed by the past but not limited by the past. Is it possible? So that's the question. This
new kind of future which is based on the past but not limited by the past has a surprising impact on the quality of life in the future or even in the present. Living from the future allows life to be lived with a power which is derived from not what is predictable but what is possible. So we are bringing possibility theory rather predictability. Next. Now consider that this is our past and I have deliberately given some black color here. जिंदगी है काफी सारी बहुत कुछ बदला है गलत चीजें हैं गड़बड़ है बहुत कुछ हो गया लाइफ में मेरी इंटेंशन नहीं थी लेकिन ऐसा हो गया प्रेजेंट में कुछ उसका हिस्सा आ रहा है and if you pull something from the future you can make it brighter but this process is not easy to relinquish the past आपके गले को ऐसे पकड़े रहता है past something like this और जैसे एक मंकी को एक केला घड़े में डाल दो घड़े का जो मुंह है छोटा हो तो मंकी उस घड़े में हाथ डाल देगा और केले को पकड़ लेगा तो फिस्ट बन गया और फिस्ट बाहर निकलेगा नहीं ऐसे तो हाथ डल जाएगा but the moment the monkey closes the fist catches the banana and closes the fist it will not come out of the picture so what will happen वो केला सड़ जाएगा उसके हाथ में पड़ा पड़ा और उसका हाथ बाहर ही नहीं निकलेगा this is what happens with most of us we don't relinquish the past easily इतना आसान नहीं होता past को छोड़कर something goes wrong in the past and it keeps playing on our mind again and again it happens with most of us so how is it that let go actually you will perceive it that let go has been a biggest principle being employed by great people जितने भी लोग आगे बढ़े हैं लाइफ में जितने भी लोग महान बने हैं हमने लेट गो किया है लेट गो quite often let go किया है because they have been going into the future deriving impetuses from the future कि future में मुझे ये करना है future में मुझे ये करना है so all the impetuses they have been picking from the future rather than being dragged by the past although this is very difficult और सपोजिंग मैं यहाँ पे बहुत अच्छा कुछ इंस्ट्रक्ट करना चाह रहा हूँ और पास्ट ने इसको भरा हुआ है so can you design something beautiful in this area जिस एरिया जो भरा हुआ है पहले से अच्छे से उसमें कुछ अच्छा सा क्रिएट कर सकते हैं क्या बिल्डिंग बना सकते हैं कोई ड्राइंग बना सकते हैं what needs to be done clean it first उसको पहले खाली करना then and then only I can think of creating some new design thereof. Otherwise, it's not possible. That is why I said forgetting is a blessing. Because it makes way for the storage of new information. अगर हम भूलेंगे नहीं सब कुछ याद रहेगा कि पूनम ने ऐसी ठीक नहीं कराया था और वो जो लड़की पीछे बैठी है वो लेट आई थी तो सारी चीजें मैं ऐसे याद रखूंगा तो मेरा अगला सेमिनार क्या होगा तो पूनम ने ठीक नहीं कराया था वो लड़की लेट आई थी इस तरह से याद रहेगा ना everything is fan story everything every small thing so क्या होगा मेरे दिमाग से वैसे ही भर जाएगा कि पूरा भर देगी तो लड़की भर देगी मेरे दिमाग में नया आएगा आ सकता है क्या करना है पूनम को कहना पड़ेगा पूनम तुम अपनी जगह पे रहो लड़की को कहना पड़ेगा तुम अपनी जगह पे रहो मुझे कुछ क्रिएट करना I have to really make way for the storage of new information इसलिए forgetting is a blessing. अगर हम नहीं भूलते बात कुछ ना भूलते तो लाइफ की अपनी पत्थर बहुत खराब हो जाएगी This comes up as a topic actually elasticity dilemma. If you are studying a course on neural networks you will find this topic there. Elasticity कितना retain हो और कितना भूला जाए ऐसा नहीं कि सारा बच्चे भूल जाए एग्जाम में कुछ लिखना याद ही ना है मैं तो भूल गया ये तो ब्लेसिंग है तो ऐसा नहीं हो रहा है जैसे कुछ ही भूल जाए सुबह खाना खाया था मुझे नहीं पता
शीशा लगा होता है ना, उसको देख करके शीशे को पीछे को मैं गाड़ी चला रहा हूँ, नेगोशिएट कर रहा हूँ, तो ठीक पहुँच जाऊँगा और मैं घर पे पहुँच सकता है ऐसे? Can I reach? Not possible. थोड़ा सा डिस्टेंस तो चल सकते हैं। रियर व्यू से लाइफ नहीं ले होगी। रियर व्यू हेयर मीन्स पास्ट, पीछे को देख रहे हैं, पास्ट को देख देख के अपनी ड्राइव को आगे लीड कर रहे हैं, लाइफ को आगे चला रहे हैं, इससे लाइफ बढ़िया नहीं बनने वाली। You have to have a truck with past, some brush with the past, insofar as there were good elements, retain them, forget the rest, make way for new possibilities to bring out. Now, what is the possibility? Possibility, the ordinary meaning is an outcome or goal in the future that may happen or present or may not happen at all. ये तो ordinary meaning है जो हम possibility का लेते हैं। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे हैं possibility का meaning ये है a phenomenon that exists in and impacts the present. अभी हमारे thought में आया, उस thought ने हमें action के लिए बाध्य किया अभी, तो इसका मतलब इसकी प्रेजेंस अभी हो सकती है, फ्यूचर में नहीं जरूरी है कि आए। जो ऑर्डिनरीली हम कहते हैं व्हाट इज द पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रेन अराइविंग एट अ स्टेशन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ ट्रेन अराइविंग एट अ स्टेशन, वो प्रोबेबिलिस्टिक मीनिंग है। जो पॉसिबिलिस्टिक मीनिंग है वो प्रोबेबिलिस्टिक है, जो पहला मीनिंग है। हम वो मीनिंग नहीं लेना चाह रहे, हम वो मीनिंग लेना चाह रहे हैं कि आज हमारी थॉट में आ रहा है एंड देन द थॉट्स pulls up or pushes us into action. That's the meaning of possibility that we are taking. Next. Evolving nature of mankind has already been demonstrated by way of couple of products. For example, जैसे DMP dot matrix printer था, उसके बाद कौन सा प्रिंटर आया? लेजर। So LaserJet was just a new variant or a better variant of DNP? क्या उसी का वेरिएंट था ये? नहीं, इससे मार्केटली डिफरेंट था। सारा पास्ट का जो भी प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी सारी छोड़ दी, लेकिन नई टेक्नोलॉजी उभरी। Isn't that? They had no truck with the past. So इसी तरह से लेजर, रेडियो, टीवी, पीसी जो नए इन्वेंशन है, थोड़ा सा बियर करो, गर्मी बियर कर लो, शोर बहुत नहीं करेगा। So possibility exists in thought, language and declaration. Declaration is also very good. The moment you declare, then people start joining you also. जैसे रामदेव ने डिक्लेयर करा हेल्थ फॉर ऑल, what happened? Was Ramdev alone? No. Thousands and thousands of people joined him because he declared something. So declaration also invites other people in joining your cause. Nothing dies faster than a brilliant idea in a closed mind. अगर आप शेयर नहीं करते किसी के साथ और घर में रख के बैठे रहते आइडिया, मेरा आइडिया मैं नहीं किसी को देता, तो वो आइडिया जल्दी से खत्म हो जाएगा, dwindle away, it will vanish. क्योंकि उसको हवा नहीं मिलेगी, बल नहीं मिलेगा। Are you getting? Whenever a filled up tired mind generate a marvelously new idea. तो इसके लिए ये भी जरूरी है, आपके जो सिलेक्शन लेटर आपको गई, उसमें लिखा होता है ना कि 7 से 8 घंटे की स्लीप लेनी है। आपको मिला सिलेक्शन लेटर? नहीं मिला। How many of you got selection letter? उसमें लिखा था स्लीप के बारे में कुछ, तो इसीलिए लिखा था कि कुछ नए आइडिया जनरेट करने, तो एजिलिटी जरूरी है। अगर आपको नींद आ रही है, थके हुए हैं और आपको कह रहे हैं आइडिया जनरेट करो, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। You have to really agile in your stature. Next. Before we go to the next session, time एक और नया ब्रेक लेते हैं। पहला ब्रेक क्या था? स्ट्रेच ब्रेक। तो नॉवल ब्रेक लेना चाहिए क्योंकि नॉवल इश्यूज पे सारी बातचीत चल रही है। तो नए ब्रेक का नाम है मोबिलिटी ब्रेक। मोबिलिटी, यू हैव टू बी मोबाइल। जहां आप बैठे हैं वहां से उठ के दूसरी जगह जाएंगे। अगर इधर बैठे तो इधर आ जाएंगे, इधर बैठे तो वहां चले जाएंगे, उधर बैठे तो इधर आ जाएंगे। और जो अपनी सीट से
नहीं हिलेगा उसको पाप चढ़ेगा। Everybody takes place. कोई ऐसा तो नहीं है बिल्कुल स्टिक करके वहीं बैठा हुआ है। उन्होंने अपना टेस्ट खेला। Last benchers, आप इधर आ जाओ। बिल्कुल सीट नहीं छोड़ी जैसे जिसने कहा कि नहीं मैं यूनिवर्स चलता जाएगा मैं यहीं खड़ा रहूंगा। We now are going to undertake a new distinction of how do we listen. In fact, lot of premium has been laid on speaking. Books available हैं कैसे बात करनी है कैसे बोलना है स्पीकिंग के ऊपर बहुत सारी प्रीमियम ले किया गया है। But have you ever seen a book on listening? How to listen? नहीं सुना होगा। To my mind, listening is extremely important, particularly for students, researchers, and in fact for everybody. In families also, झगड़े तभी होते हैं जब वाइफ हस्बैंड को नहीं सुनती, या हस्बैंड वाइफ को नहीं सुनता, जब बच्चे माँ बाप को नहीं सुनते, जब माँ बाप बच्चों को नहीं सुनते। कंट्रीज में झगड़े तभी होते हैं एक कंट्री दूसरे को नहीं सुनता। How would it be that if everybody starts listening intently to everyone else, how would life be? झगड़े खत्म हो जाएंगे, दुनिया अच्छी हो जाएगी। अगर एक दूसरे को सुनना शुरू कर दे कंट्रीज की वर्ल्ड में एक वेव चल पड़े सुनने की। Let us start a wave of listening. If we start listening to not just what has been said, what is intended to be said. कुछ कहना चाह रहे कह नहीं पा रहे वो भी अगर हम ग्रास्प कर लेते हैं how would life be? Perfect. So listening is very important, extremely important for studentship, for researchers and for everyone else. We in fact listen through filters and see through colored glasses. Normally हम लाइफ में जो एक्सपीरियंस होता है प्री कंसीव्ड नोशंस बन जाते हैं, उन नोशंस के थ्रू पास करके चीजों को व्यू करते हैं। अच्छा ये उसने कहा है उसका तो मुझे पता है, आई नो, अगर उसने ये बात कही ना तब तो इसका मीनिंग यही है। वो इंस्टीट्यूट वो रहने दो, मुझे मालूम है उस इंस्टीट्यूट में क्या होता है, मुझे पढ़ाई के नाम पे वो रहना and so on and so forth. We have preconceived notions through which we allow all the information coming to us. So essentially we see through color glasses and listen through filters. Filter means FIR filter नहीं, या दूसरा filter नहीं है नेपाली filter का। Here it means filter means preconceived notions, जिनके थ्रू हम उनको मॉड्यूलेट करके फिर सुनते हैं। Whereas we claim ourselves to be unbiased, हम नॉर्मली अपने आप को क्लेम करते हैं कि मैं जो सुनता हूँ बिल्कुल ऐसा ही सुनता जो कहा जाता है। नॉर्मली वी थिंक कि बड़े अनबायस्ड हैं, तो बिल्कुल जैसा आप कहते हैं वैसे सुनते हैं
अपना तो कुछ मसाला ऐड करते ही नहीं हम. Objective and unbiased, and yet almost invariably we listen through filters and see through color glasses, that is preconceived notions. We accept what is comforting for us. हम वो चीज को आराम से ले लेते हैं, इंग्रेड कर लेते हैं, समा लेते हैं अपने दिमाग के अंदर जो हमारे लिए कंफर्टिंग है, which suits us. But whatever upsets our established order of current thinking, acting and being, हमारा कुछ ऑर्डर है जिसमें हमारा विचरण हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल मैं पेसिमिस्टिक हूँ, तो मुझे पेसिमिस्टिक कुछ बात आ रही तो मुझे अच्छी लगेगी ना. ना ऐसे दुनिया में कुछ अच्छा, करप्शन इतनी ज़्यादा, नौकरियाँ मिल ही नहीं सकती, और मेरे को कोई कहता नौकरी नहीं मिल सकती करप्शन, मैं कहता हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा, तो ऐसे ही होता है. Because it suits me, my temperament and my preconceived notions से match कर रहा है. So we accept what suits us or is comforting for us, but yet we tend to outrightly means without even weighing the pros and cons, without even substantial exploration, whatever upsets our established order of thinking, acting and being मैंने विचरण जिस तरह से हम हैं, तो अगर उसको कुछ डिस्टर्ब करता तो उसको हम आउटराइटली रिजेक्ट कर देंगे, उसको एक्सप्लोर भी नहीं करते कि क्या इसमें वैल्यू है. जैसे मैंने कहा था कंसिडर शुरू में कहा ना, 2 व्यू पॉइंट दिए थे. लाइफ इज नॉट ए पर्सनल पोजेशन बट इट्स अ रेशियल हेरिटेज दैट वी सी फॉर यूज एंड डेवलपमेंट. ये बात कही थी मैंने, तो व्यू पॉइंट था, तो उसको आपको एक्सेप्ट करना चाहिए, फिर वे करना चाहिए कि वाकई ऐसा है. Next. How then to develop our ability of listening and seeing? The fundamental way is to become aware that I am not listening. Actually, the path by which we develop this ability of listening and seeing is by discovering the degree to which we do not. अगर हमें पता लग जाए कि मैं ढंग से सुनता नहीं हूँ, अगर मैं अवेयर हो जाता हूँ इस चीज के बारे में, तो ग्रेजुअली वो जो लिमिटेशन है, मेरा गला पकड़ा हुआ है, और धीरे धीरे लूजन हो जाएगा, लिमिटेशन खत्म हो जाएगा, एंड आई विल स्टार्ट लिसनिंग प्रॉपर्ली टू अदर पीपल. आर यू गेटिंग अवेयर? मैं क्या कह रहा हूँ? अगर आपको ये पता लग जाए कि ये आप में कमी है, अगर आप अवेयर हो रहे हैं उस कमी के बारे में, तो कमी रह नहीं सकती. जैसे कि आप सोचते मैं फिट हूँ, मुझे क्या है, तो ठीक ठाक हूँ, अच्छा लगाऊं, चंगा लगाऊं, लेकिन आप हाफ ए किलोमीटर दौड़ लेते हो और हाफ ए किलोमीटर दौड़ने के बाद हफ जाते हो, हफ जाते हो, तो आपको जो अवेयरनेस आती है आपकी फिटनेस के बारे में, वो है अवेयरनेस. ऐसे बैठे बैठे तो हर एक आदमी को लगना अच्छा बनाऊं, मेरे को क्या हुआ, मैं चंगा बनाऊं. But the moment you actually run half a kilometer and then you start, सांस ही नहीं आ रहा आपको लगता, फिर पता लगता है कि क्या फिटनेस लग रहा है. तो जब आप अवेयर हो जाओगे एक चीज के बारे में, तो धीरे धीरे आप उस पर काम करना शुरू करोगे, एंड ऑब्वियसली द लिमिटेशन विल गो अवे. तो सबसे जरूरी तो पहले ये है, ये आइडेंटिफाई करना कि कितना ढंग से मैं सुनता हूँ. लिखा है, you couldn't have imagined the level of your poor fitness unless you actually had run half a kilometer. Next. An awareness of the filters and the colored glasses and the striking limits that they impose on us allows for a refreshing freedom from them. ये अगर पता लग जाए कि मैं अवेयर हो जाऊँ कि मैं ढंग से सुनता नहीं हूँ, मैं कलर ग्लासेस से देखता हूँ दुनिया को या लाइफ को, जहाँ सुनता ही नहीं ढंग से किसी को, तो नेचुरली आई वर्क ऑन इट एंड मेरे को फ्रीडम मिल जाएगी उन लिमिटेशन से. धीरे धीरे फ्री हो जाऊँ. Circumstances, situations, even people, and so much so that our entire approach towards life will change dramatically the moment we abandon or leave the filtered listening and colored viewing modes. अगर हम छोड़ देते हैं इस
तरह से देखना लाइफ को, जिस तरह से सुनना लाइफ को, अदर पीपल को, तो लाइफ चेंज होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे पास एक टेक्नीशियन है और मैं उसको काम नहीं देता ये सोच करके, मेरा प्री कंसीव्ड नोशन है कि उससे तो काम होगा नहीं, ठीक है, तो उसको मैं काम नहीं देता, हाउ वुड दैट पर्सन अकर टू मी लेटर, तो काम चूंकि दूंगा नहीं तो उसका एक्सपोजर नहीं होगा, वो डेवलप नहीं होगा, तो वो तो और उस तरह का बना रहेगा। अरे सपोजिंग मैं अपनी करंट कन्वर्सेशन उसके बारे में छोड़ दूं कि ये ऐसा है और मैं काम देना शुरू कर दूं उसको, तो उसका कुछ एक्सपोजर होगा, कुछ गलती करेगी, कुछ मैं मॉनिटरिंग करूंगा, कुछ करेक्शन करूंगा, तो ही विल अकर डिफरेंटली टू मी लेटर ऑन, isn't that? But if I perceive him in the light that he has been in, I am providing a continuum for him. मैं उसकी कंटिन्यूटी के लिए वे प्रोवाइड कर रहा हूँ बेसिकली। Are you getting? Clear? Everybody? So circumstances, situations, even people, and so much so that our approach to life itself changes dramatically the moment we abandon or leave our color meaning and filter listening mode. छोड़ देते हैं color meaning, life will occur differently to us. In fact, we construct people and circumstances. The way we listen and see them, indeed by a filtered listening of them, we force people to be the way they are. एक निकम्मड़ टेक्नीशियन जो मेरे हाथ लग गया, वो निकम्मड़ और बनता जाएगा अगर मैं उसको काम नहीं दूंगा तो। Isn't that? So because my listening of him is that he is a निकम्मड़, he is useless fellow. ये पूनम को मैं कभी आगे से सेमिनार कंडक्ट करने को नहीं दूंगा क्योंकि इसने वो ऐसी चीज नहीं कराया, तो क्या होगा? पूनम को तो अपॉर्चुनिटी मिलेगी नहीं ग्रो करने की। इसको कैसे पता चलेगा कि सेमिनार कैसे ऑर्गेनाइज किए जाते हैं? She will only learn if I abandon my view of her. That Poonam is capable and she can in henceforth she can do better in the seminar hall. Isn't that? Are you getting? This is how listening is important. Oh, ये क्या कर दिया? बढ़िया से चल रहा था स्टोरी से, नहीं? मतलब अच्छा चल रहा था, अच्छा लग रहा था, नींद सी थोड़ी आ रही थी और मजे से आ रहे थे। ये क्या एक्सरसाइज है? कोई बच्चे थोड़ी ना फाइनल ईयर के स्टूडेंट है और पीएचडी स्कॉलर का पता नहीं क्या क्या, और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी, और एक्सरसाइज दोगे बताओ? सेमिनार जवाब ना होना, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? एनीवे, इस सेमिनार का मीनिंग एक्चुअली तभी आपको मिलेगा पूरा जब आप एक्सरसाइज करोगे। सेमिनार एक्चुअली हैपेंस इन द एक्सरसाइज। सेमिनार ऐसे नहीं होगा, सेमिनार का एक्सरसाइज नहीं होगा। व्हेन यू एक्चुअली डू द एक्सरसाइज, तो इसको स्नैपशॉट ले लो, थोड़ा टाइम की लिमिटेशन है। ओके, तो स्नैपशॉट तो ले लो, इसको करना है, और जो नहीं करेगा उसको क्या होगा? उसको पाप चढ़ेगा। ये देख लो, ये आपके ऊपर है। You have to form yourself into groups of two. एक X हो जाएंगे, एक Y हो जाएंगे. X will share something to Y. X will share something out of his own life to Y. Y will tell back to X that this is what you told. आपने ये बातें कही हैं. Then ये किसको बताएगा Y? X को. फिर X बताएगा कि मैंने
ये बातें तो कही भी नहीं थी, ये तो तूने अपना ही गलत कर लिया है। जहाँ ये मैंने कहा था ये तूने बताया ही नहीं, ये मैंने इतना कहा था लेकिन थोड़ा मसाला तुमने अपना ऐड कर दिया। तो इस तरह से x वापस y को बताएगा कि ये कहा था मैंने तो, और ये तूने अपना ऐड किया सारा। इससे क्या पता चलेगा, हाउ डज y लिसन टू x? इज दैट क्लियर? दिस इज द वे टू डू द एक्सरसाइज। लेकिन ये जो शेयरिंग करनी है, शेयरिंग हिस्टोरिकल फैक्ट्स की नहीं होनी चाहिए, टेक्निकल फैक्ट्स नहीं होने चाहिए, पजामा शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसा नहीं कहना कि यार मैं कल तेरे घर आया था और मैंने बेल दी, तू बाहर ही नहीं निकला, मैंने फिर बेल दी, तू फिर नहीं आया, मैंने फिर बेल दी, तू फिर नहीं आया, मैंने जोर से बेल दी, तब तू आया, तूने पजामा पहना हुआ था डॉट्स वाला। इस तरह की शेयरिंग नहीं करनी है, मतलब इसमें कुछ शेयर करने वाला है ही नहीं। You have to share some experience, but not technical. पजामा शेयरिंग नहीं होनी चाहिए। कोई हिस्टोरिकल फैक्ट्स, अर्थ गोल है, अर्थ सन के अराउंड चक्कर लगाती है, इस तरह की शेयरिंग नहीं करनी। Something out of your own experience, ताकि वो स्टोरी अच्छी से बने। Then फिर देखेंगे कि वो वाई कितना कैप्चर कर रहा है स्टोरी को, how much he is present to your story, जहाँ अपना तरीका कुछ ऐड करता जा रहा। इस तरह से फिर रिवर्स करके रोल्स को फिर वही एक्सरसाइज रिपीट करनी है, फिर अपने ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड करने हैं, फिर इसको रियल लाइफ में ले जाना। घर में सबको सुनना शुरू कर देना अच्छी तरह से। पेरेंट्स को, जैसे आप स्टूडेंट्स हो, बच्चे हो तो पेरेंट्स को, अगर आप पेरेंट्स हो तो अपने बच्चों को, स्पाउस को, समथिंग लाइक दैट। ओके, ऑलराइट, नेक्स्ट। Next we come to what is research. Research के कुछ definitions देखते हैं। It's a systematic, controlled, critical investigation of hypothetical propositions. Hypothetical means as of now we are not sure whether they are true. About presumed relations among natural phenomena. कुछ नेचुरल फिनोमेना लाइफ में चलते हैं, मोटर्स के बारे में, मशीन्स के बारे में, इकोनॉमिक्स, पीस, वॉर, एनीथिंग। So this is one definition. Another is combination of experience and reasoning, targeted at discovery of truth or invention of new theory, framework, methodology, material, product, machine, device, etc. इनमें से कुछ भी नया आप ढूंढते हो, इन सब के बारे में, प्रोडक्ट कोई नया ढूंढते हो, वो भी रिसर्च कहलाएगा। इट कुड बी ए वॉयज, वॉयज मीन्स जर्नी, लॉन्ग जर्नी ऑफ डिस्कवरी, अ जर्नी, एन एटीट्यूड, ए मेथड ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, ए क्रिटिकल इंक्वायरी इनटू सीकिंग फैक्ट्स एंड प्रिंसिपल्स। इट इज अ साइंटिफिक एंड systematic research for data analysis interpretation. Data gathering करेंगे, कुछ रिसर्च ऐसी भी होती है which is entirely data based. Data gathering करते हैं, कुछ क्वेश्चनर बनाए जाते हैं, क्वेश्चंस दिए जाते हैं, वहाँ से रिस्पॉन्सेज आते हैं, उनको एनालाइज किया जाता है, उनकी इंटरप्रिटेशन की जाती है। That's also kind of research. Next. Now what it is not, it is primarily concerned with discovering, inventing and creating. Sorry, what it is की बात कर रहे हैं। So it is inventing and creating novel frameworks, ideas, products and materials. In general, novelty may rely on past data. Sorry, in generating novelty, one may rely on past data and information, but much of it has to be anticipatory, non-anticipatory, or anticipatory non-causal activity. कहने का मतलब पास से कुछ impetus ले सकते हैं, पर जरूरी नहीं कि पास से बंधा हो। It could be driven from the future, जैसे कि laser jet printer. In place of DOS operating system, you had a Windows operating system, which is entirely linked from the DOS operating system. Entirely new operating system was in design.
somebody someday thought, sat and thought कि इसको मैं छोड़ देता हूँ, जैसे मल्टी इंटरफेसेस है, mouse was not there as an interface, keyboard was the interface. So somebody someday thought कि कीबोर्ड को छोड़ करके हम क्या नया इंटरफेस डिजाइन कर सकते हैं, like that. Okay, so not always past driven, maybe that some impetus it is picking from the past, but then driven by the future. In future ध्यान झांक के देखने के what could be more relevant, what could be more profitable as a interface, कुछ ऐसा सोच करके डिजाइन किया जाए. So the output of research may essentially not just depend upon past, but may even derive impetuses from the future. Future से impetus derive कर सकते हैं. Simply stated, it may be a deeper plunge into the future and a journey into an uncharted territory. ये पहले भी मैंने कहा था that the enterland may not be known कि कहाँ पहुँचना है. Okay, next. Not the right way, but just a way. फंडामेंटल रिसर्च क्या होता है? जैसे एक सर्वे भी करते हैं, सर्वे को भी रिसर्च का रूप माना जा सकता है, पर फंडामेंटल रिसर्च की पहले बात करते हैं. इट इज जनरेटिंग सम न्यू आइडिया. आपने और कुछ नहीं करा, सिर्फ एक आइडिया ही नया दे दिया, वो भी रिसर्च कहलाएगा. A new implementation or a new medium. जैसे मान लीजिए पहले LSI या VLSI डिजाइन नहीं किसी ने प्रपोज किया, लेकिन आपने LSI VLSI डिजाइन प्रपोज कर दिया. पहले वायर्ड सर्किट्स थे, बट नाउ यू हैव मेड सम न्यू इंप्लीमेंटेशन मीडियम, तो वो भी रिसर्च में आएगा. The new technique of doing something old, कुछ है पुराना बट टेक्निक आपने नहीं लगा दी, और doing something novel using an old technique, टेक्निक पुरानी है कुछ नया कर डाला. A new interpretation of an existing fact or a new fact by itself. Fact था, उसको इंटरप्रेट अलग तरह से करके आपने दुनिया को पेश किया, वो भी रिसर्च कहलाएगा. A new methodology or a new facet or new light thrown onto something existing. A new characterization, a new framework, an extension or generalization of the existing limits. जैसे कि मान लीजिए पहले मिलीमीटर स्केल पे काम चल रहा था, फिर आप नैनोमीटर स्केल पे चले गए, तो वो भी रिसर्च कहलाएगा. Are we getting? We are trying to extend the limits. Now, what is framework basically? Framework क्या होता है? Supposing you draw a flow chart, you are called upon to draw a flow chart. All of you are given to draw a flow chart. तो सबका फ्लो चार्ट सेम होगा क्या? क्या डिफरेंस होगा? Okay, or somebody is saying thinking ability way. Somebody thinks like this, somebody thinks the other way around. उसकी स्ट्रेटेजी अलग है, तो फ्लो चार्ट अलग हो जाएगा. इनिशिएशन और डिस्ट्रीब्यूशन सेम हो सकता है, बट जाने का रूट सब अलग अलग हो, फ्रेम अलग अलग, ब्लॉक्स अलग अलग हो, प्लॉटिंग अलग अलग. दैट इज फ्रेम. और कुछ नहीं. अभी तो क्वेश्चन ये है कि फ्लो चार्ट सबका सेम क्यों नहीं होता? आंसर ये है कि कुछ आदमी निटिग्रिटी ज्यादा डाल सकते हैं और कुछ लोग हाई लेवल की बात कर रहे हैं, निटिग्रिटी की बात नहीं कर रहे हैं. टू दैट एक्सटेंट फ्लो चार्ट डिफरेंट हो जाएंगे. अरे ज्यादा निटिग्रिटी, जैसे किसी ने कहा कि एंगल 45 डिग्री स्टेपलर मोटर को घुमाना है, ठीक है, फायरिंग एंगल इतना चूज करो, ये करो, वो करो, निटिग्रिटी पे बात कर रहे हैं, बिट लेवल डिटेल की बात कर रहे हैं, तो फ्लो चार्ट नेचुरली इसमें ज्यादा निटिग्रिटी आ गई. नाउ सपोज यू टेक आउट द निटिग्रिटी, आप कहते हैं निटिग्रिटी नहीं डालनी है ज्यादा, तो व्हाट इज लेफ्ट इज हाई लेवल स्टेटमेंट्स. तो सारी निटिग्रिटी बाहर निकाल दो फ्लो चार्ट से, सिर्फ हाई लेवल स्टेटमेंट्स बच जाए, उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क, ब्रॉड लेवल. जैसे मान लो बातचीत करनी है एक कंट्री ने दूसरे कंट्री से, तो पहले फ्रेमवर्क तय होगा कि इस फ्रेमवर्क में बात करेंगे, करेंगे हाई लेवल कंस्ट्रेंट्स क्या होंगी, जैसे पीस को डिस्टर्ब नहीं करना है, या
हॉल्टिंग या फोर्स हॉल्ट की है वही हॉल्ट करे रहेगी या पीछे चली जाएगी। बाकी फिर निटिग्रिटी बैठ के सेक्रेटरी लेवल, पहले मिनिस्टर लेवल पे क्या हुआ, हाई लेवल, जब प्राइम मिनिस्टर लेवल पे हाई लेवल की बात हो, उसके बाद मिनिस्ट्रियल लेवल पे थोड़ी सी निटिग्रिटी आ जाएगी, उसके बाद फिर सेक्रेटरीज बैठेंगे, उसके बाद नीचे और उनके जो ऑफिस बीरर है, बाबूज है, वो बैठ के निटिग्रिटी तय करेंगे, विच विल बी डिटेल्ड डॉक्यूमेंट। तो निटिग्रिटी बाहर निकाल दी जाए और सिर्फ जो हाई लेवल पे बच जाए उसको बोलते हैं फ्रेमवर्क। अरे बेटे, तो अगर आप फ्रेमवर्क भी प्रपोज करते हो नया किसी चीज के बारे में, वो भी रिसर्च कहलाएगा। अरे बेटे, क्लियर एवरीबॉडी? नेक्स्ट, नाउ सर्वे as a necessary adjunct to fundamental research and as an entity by itself also. सर्वे अपने आप में भी रिसर्च पेपर प्रोड्यूस कर सकता है, एंड सर्वे कैन लीड टू फंडामेंटल रिसर्च, और फंडामेंटल रिसर्च के ऊपर पेपर्स पब्लिश हो सकते हैं। आर यू गेटिंग? सो दो तरह से देखा जाए सर्वे को, एक तो नेसेसरी एडजंक्ट और एक एन एंटिटी बाय इटसेल्फ, क्योंकि सर्वे करके फिर आप पेपर पब्लिश कर सकते हो, जिसको हम सर्वे पेपर कहेंगे। सर्वे लीडिंग टू फंडामेंटल रिसर्च वो अलग उसका रोल हो गया, वो नेसेसरी एडजंक्ट हो गया टू फंडामेंटल रिसर्च। तो सर्वे कितने पेपर्स का करना है मिनिमम? मैंने 100 लिखा है। सो देयर इज अ थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर्स। अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर्स, द स्मॉलेस्ट लार्ज नंबर कितना हो सकता आपके हिसाब से? स्मॉलेस्ट लार्ज नंबर, लार्ज नंबर किसको कहेंगे? थोड़ा बड़ा हो, जो टेक्निकली में यूज थोड़ा बड़ा हो। नहीं, वो तो सब्जेक्टिव हो ना, फिगर हो, फिगर, इसको हम लार्ज नंबर कह सकते हैं। Theory of large numbers, according to which 10 is the smallest large number, 10. इसका मीनिंग ये है कि statistics start showing up in an experiment once you do it more than 10 times or almost 10 times. जैसे कि अगर आप coin throw करते हो, how many times head will come and how many times tail will come? What is the probability of getting head? 0.5. लेकिन ये 0.5 तब आता है जब आप एक्सपेरिमेंट 10 से ज्यादा दफा करते हैं। अगर आप 3 दफा करते हो तो हो सकता है कि 0.8 आ जाए probability of getting head, या probability of getting tail 0.9 आ जाए, ऐसा भी हो सकता है। The probability result approaches 0.5 as the number of experiment approaches 10 or you will get 10 is the least. इसका मतलब statistics, fair statistics start coming into picture once the experiment is done 10 times or even more times. तो अगर 10 पेपर पढ़ते हो और सारे पेपर कनेक्टेड से हैं, तो क्या होगा? आपका दिमाग के अंदर वो सारा विचलन होने लगेगा। The ideas will start springing to you and you start, randomness will start playing its role. Randomness will start playing its role. Randomly कुछ नया आइडिया आपको फूट सकता है। 1 या 2 पेपर पढ़ के आप सर्वे नहीं कर सकते। Nothing new will happen, क्योंकि बेस ही नहीं बनता है, randomness जनरेट ही नहीं हो रही है। So as you read about 10 or more papers, then something will start cropping up in your mind also to generate something new in the field. Are you getting? Everybody? So, with a view to coherently bring out the common thread or commonality, ये जो सारे पेपर पढ़ेंगे, ये नॉवल रीडिंग नहीं करनी है, ऐसे बैठ के पढ़ लिया जी बस, फिर भूल गया, पढ़ लिया, भूल गया, पढ़ लिया, भूल ऐसे। You have to find out कि सब में कॉमन चीज क्या है, what are the various facets of development, ये सारा देखना है। To classify various phases of development, कि 10 साल में ये डेवलपमेंट हुई, नेक्स्ट डिकेड में ये डेवलपमेंट हुआ, नेक्स्ट डिकेड में कुछ ऐसा हुआ, ये सारा डेसिफर करना है। Decipher or find out various facets and issues. Issues क्या क्या थे रिसर्च में?
ठीक है, जैसे पावर कंजम्पशन का इशू था, फ्यूल कंजम्पशन का इशू था, या और क्या इश्यूज थे। Some issues are picked up. To compare and contrast the salient features, इस पेपर में salient feature क्या थे, इसमें क्या थे, ये सारे ढूंढने हैं। Thus to protect the current state of the art. State of the art क्या होता है? ये वर्ड आपने सुना होगा, state of the art. Not exactly. Through state of the art, we get to know. Through literature survey, we get to have the idea of state of the art. Yes, you want to say something? State of the art is all that has been done in the past and what now, and possibly what is going to happen in the future. इसको बोलते हैं state of the art. एक व्यू तो स्टेट ऑफ आर्ट का ये है, और एक और है इसका कॉन्टेक्स्ट है स्टेट ऑफ द आर्ट का, उसका मीनिंग होता है मॉडर्न। जैसे हम कहते हैं कि स्टेट ऑफ द आर्ट लेबोरेटरी, इसको तो मॉडर्न लेबोरेटरी, स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी, मॉडर्न फैसिलिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट इंस्टीट्यूट, स्टेट ऑफ द आर्ट समथिंग। एक तो वो व्यू है विच मीन्स मॉडर्न, इक्विप्ड विद लेटेस्ट इक्विपमेंट। एक स्टेट ऑफ द आर्ट होता है ऑल दैट हैज डन इन द, ऑल दैट हैज हैपेंड इन द पास्ट, उसका एक्सेस कर लेना, उसका नॉलेज ले लेना, और ये कह पाना कि आज उसका स्टेटस कहाँ है, कहाँ तक ये फील्ड पहुँचा है, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ द आर्ट। क्लियर एवरीबॉडी? और इसको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है, हाइफन हाइफन एंड हाइफन। This is actually not separately written, हाइफन के साथ ही लिखा जाएगा, state of the art as one word. And to probe future scenarios, सर्वे का पर्पस ये भी होता है कि this is done, लेकिन ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, और ये हो सकता है। All this is called offshoots. ऑफशूट का मीनिंग वैसे जैसे प्लांट्स के बारे में क्या होता है, बेबी प्लांट आ गया तो उसको भी ऑफशूट बोलते हैं, इसमें यहाँ पे जो करंट कॉन्टेक्स्ट है, रिसर्च का कॉन्टेक्स्ट है, उसमें ऑफशूट का मीनिंग है कुछ नए आइडियाज फूटना जो पहले किसी को नहीं फूटे हैं, नहीं पता चला है, बट यू आर ट्राइंग टू जनरेट सम न्यू आइडिया आउट ऑफ द लिटरेचर सर्वे। तो हर एक पेपर के ऑफशूट निकालेंगे हम, हर एक पेपर से ये पॉसिबल था, ये कुछ हो सकता था, ये इस ऑथर ने नहीं किया, फिर ये जो नहीं करा वो सारा कंबाइन करके उसको बोलते हैं प्रॉब्लम फॉर्मुलेशन। जो नहीं हुआ लेकिन हो सकता है, संभावना है उसकी, पॉसिबिलिटी है, उसको हम नथी करके सारे को प्रॉब्लम स्टेटमेंट का नाम देते हैं। नेक्स्ट, नाउ व्हाट इट इज नॉट, फंडामेंटल रिसर्च क्या चीज नहीं है। सम ऑफ अस थिंक के बहुत सारा पेपर पढ़ लिए और सारे पेपर्स को नथी करके उनका निचोड़ निकाल के पेपर में डाल दिया, तो वो फंडामेंटल रिसर्च है। नो, दिस इज नॉट फंडामेंटल रिसर्च। इसको एट बेस्ट सर्वे कह सकते हैं। सारे पेपर्स को पढ़ा, उन सबका निचोड़ निकाल के एक पेपर में डाला, उसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वे। कैन बी टर्म्ड एज सर्वे आल्सो, बट नॉट फंडामेंटल रिसर्च। फंडामेंटल रिसर्च इज समथिंग like this, फुटाव, जैसे बीज होता है ना, बीज क्या बनता है, अल्टीमेटली पेड़ बनता है। तो एक छोटा सा आइडिया जर्मिनेट होता है, उसको बल मिलता है, बल किसका मिलता है, आपके हार्ड वर्क का, आपकी पॉसिबिलिटी जनरेशन का, धूप मिलती है, गाइड से डिस्कशंस मिलती है, आपकी डिस्कशंस में और थोड़ा सपोर्ट मिलता है, इट अल्टीमेटली कम्स इनटू अ बिग आइडिया, पूरा ट्री बन जाता है। So it is something like this which can be adopted as a model of fundamental research, not this one. ये सारा ऐसे नथी नहीं करना पड़ेगा। Not an off the shelf item. बहुत सारे स्टूडेंट से गलती करते हैं, गाइड के पास जाएंगे और कहेंगे सर बताओ क्या करना है, तो जैसे कि गाइड ने शेल्फ से उठा के आपको बुक दे देनी हो, ऐसा तो फील्ड है ही नहीं है। रिसर्च में ऐसा नहीं है कि कुछ बुक शेल्फ पे पड़ा है और आपको दे दिया, लो भी करो, इसको ऐसा फील्ड नहीं है।
सो अनलाइक एग्जामिनेशन पासिंग, इसमें बुक का रिक्वायरमेंट होता है, इसमें जरूरी नहीं कि बुक कंसल्ट भी करें आप, बैकग्राउंड गैदरिंग के लिए कर सकते हैं, बट इट्स नेवर एन ऑफ द शेल्फ आइटम, देयरफॉर डोंट एवर कमिट द मिस्टेक of asking the guide as to what to do, because guide himself doesn't know what to do as of then. जब काम शुरू करते हैं तब उसको भी नहीं पता होता कि क्या करना है. Actually it is vaguely defined area. एरिया डिफाइन होता है, एरिया में काम शुरू किया जाता है, फिर उसमें फोकस एरिया आइडेंटिफाई होता है, फिर धीरे धीरे प्रॉब्लम फॉर्मुलेट होती है, फिर उसमें काम शुरू होता है, फिर सोल्यूशन आते हैं. ये जर्नी है. Not there, not here, not having to catch something already known. ना तो यहाँ है, ना वहाँ है कहीं कि आपको पकड़ के गाइड दे दे. It is something not known as of then. If you are given to do a specified thing, it's not fundamental research. अगर आपको कह दे कि 430 वोल्ट का या 400 वोल्ट का 250 वाट का इन्वर्टर डिजाइन कर दो, तो ये रिसर्च नहीं है. तो फिर पता लगा कि ये करना. अगर डेस्टिनेशन एग्जैक्टली स्पेसिफाई कर दी जाए, पाथ भी दे दिया जाए, तो रिसर्च नहीं कहलाएगा. नॉट जस्ट अ mere variation of the past, it may break a new ground altogether. ऐसा हो सकता है पूरी ग्राउंड से हट के भिन्न तरीके से कुछ नया कर डालें, उसको रिसर्च कह सकते हैं. नेक्स्ट, नॉट जस्ट रीडूइंग और रीहैशिंग एन ऑलरेडी डन वर्क. पहले कुछ हुआ है, उसको रीहैश कर लिया, रीडू कर लिया, थोड़ा पैरामीटर चेंज करके कर लिया, वो भी रिसर्च नहीं कहलाएगा. इट इज नॉट, दैट्स नॉट रिसर्च. नॉट इनिशियली डिफाइंड प्रिसाइजली, पहले प्रिसीजन के साथ डिफाइन नहीं होता है कि रिसर्च करना क्या है, बट इवॉल्व ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम थ्रू इंटेंसिव डिस्कशंस बिटवीन द गाइड and the candidate, or between a number of other people in the peer group. There could be discussions taking place on and off. उसमें से ये उभरेगा कि क्या करना. Initially defined नहीं होता. Not working with certainty, no exams to be given. Many times वैसे तो आपका एग्जामिनेशन का थोड़ा रिक्वायरमेंट है कि 3 या 4 पेपर PhD में भी करने होते हैं, लेकिन ये इतना वो प्री PhD वर्क है, पीएचडी के पेपर नहीं है, उसको प्री पीएचडी पेपर्स कहा जाता है. सो इसमें एग्जामिनेशन क्लियर करने में कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऐसा मान लीजिए, एक्सेप्ट फॉर प्री पीएचडी पर. ओके, एंड इट इज नॉट वर्किंग विद सर्टेनिटी. सर्टेन चीजों के साथ काम नहीं करना है. यू हैव टू ग्रैपल अनसर्टेनिटी, यू हैव टू हैव ए ब्रश, यू हैव टू हैव ए ट्रक विद अनसर्टेनिटी, यू हैव टू बी and ease with uncertainty. Uncertainty के साथ आप खेल सको और काफी अर्से तक खेल सको. Maybe 6 months uncertain environment में आप रिलेट कर रहे हैं, still you are going. Uncertain environment में move करना कठिन होता है, because all the time you are puzzled. समझ नहीं आता कि करना क्या है. Uncertain, certain पता है कि ये derivation will lead to this derivation will lead to this will lead to, आप करते जाओ. So certainty के साथ काम करना बहुत आसान है, लेकिन अनसर्टेन एनवायरनमेंट में प्रिवेल करना एक स्पेसिफिक आर्ट है जो हमें नर्चर करना पड़ेगा एज रिसर्चर्स. नाउ देयर इज एन एरिया called you know that you know. There is another area which is called you know that you don't know, and there is a third area which is called you don't know that you don't know. Let us see that through some graphical illustration. And let us say the entire knowledge of the universe is enshrined in this disk or in this circle. तो उसमें एक छोटा सा एरिया मार्क किया मैंने है, के एरिया. के मीन्स यू नो दैट यू नो. जैसे कि यू नो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, जो भी इलेक्ट्रिकल के हैं, you know electrical engineering, and you also know that you know electrical engineering. जो स्विमिंग जानते हैं वो स्विमिंग जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि वो स्विमिंग जानते हैं. क्लियर?
जो कुकिंग करना जानते हैं उनको ये भी पता कि उनको कुकिंग आती है। क्लियर? एग्जांपल्स क्लियर? के एरिया। अब केडी की एरिया वो है जिसमें आपको मालूम नहीं है कुछ, समथिंग इज नॉट नोन, बट ये तो मालूम है कि समथिंग इज नॉट नोन। जैसे कि मुझे हवाई जहाज नहीं चलाना आता है, लेकिन मुझे ये पता है कि मुझे हवाई जहाज नहीं चलाना आता। सो आई नो दैट आई डोंट नो हाउ टू फ्लाई ए एयरक्राफ्ट। ठीक है? आई डोंट नो हाउ टू डू सर्जरी, मुझे सर्जरी नहीं करनी आती, बट आई एम अवेयर ऑफ नॉट नोइंग हाउ टू डू सर्जरी। इतना मुझे मालूम है। क्लियर? अब एग्जांपल दो कोई अपनी एग्जांपल। एनी एग्जांपल कोई भी दे दो। आई डोंट नो फ्रेंच बट आई एम अवेयर दैट आई डोंट नो फ्रेंच। ये तो एग्जांपल, इसमें क्या दिक्कत है? कोई और एग्जांपल दो। दो कोई एग्जांपल दो। क्या नहीं ड्राइव करना? बाइक बोलो ना। So she doesn't know bike driving, but she is aware that she doesn't know bike driving. Yes, very good example. और एग्जांपल कोई? I don't know how to get job in USA. I don't know How to get job in USA. job in USA. You don't know how to get job in USA, but you are aware that you don't know how to get a job in USA. इसका मतलब है USA के लिए तैयार है, but not like it. Yes. Any other example? So I know the rules and regulations of the football game, but I am not able to play. You know the rules and regulations of the game, but you don't know how to play. So example ऐसे बनेगा, you don't know football playing, you don't know football playing, but you are aware, you know that you don't know football playing. आपको इतना तो ज्ञान है कि आपको फुटबॉल नहीं खेलना आता। वो अलग एग्जांपल, उसको ना बीच में घुसेड़ो, वो अलग चीज है। रूल्स एंड रेगुलेशन तो अलग हो गया, रूल रेगुलेशन की बात ना करो। Sir, as I don't know this AC is not what this is. But now Now you are fully aware. yes, You have been made aware. need fully aware, sir. Okay. So, any other example? कुछ भी दे दो। I don't know how to cook meat. मुझे मीट नहीं बनाना आता है, मांस मच्छी नहीं बनाना आता है, but I am aware that I don't know how to make fish. Any example? Now our education system is such that this is all the time transferring us from KD के एरिया टू के एरिया। इसमें यही दौड़ लगी रहती है कि जो हमको नहीं पता है उसके बारे में पता कराया जाता है। उसके लिए टीचर्स हैं, एजुकेशन सिस्टम है, बुक्स हैं, सब कुछ है। Everything is in place, isn't it? हमारा पूरा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से नेट है, हमें यहाँ से यहाँ लाने की चेष्टा में काम करता रहता है, कार्यरत रहता है, all the time working on it, isn't it? However, there is a large area which is untapped and which is called you don't know something about and you are not even aware that you don't know. बहुत सारा एरिया है which has been termed as DKD area. You don't know and you don't know that you even don't know. आपको पता नहीं है किसी चीज के बारे में और आपको ये भी नहीं पता है कि आपको नहीं पता है किसी चीज के बारे में। अब इसकी एग्जांपल दो। Like teachers know many of the students know all the topics of the syllabus, but actually many of the students in reality don't know what are the topics of the syllabus. Teacher teaching us and he expecting that students are known, but in actual it is depends. नहीं, उसको पता तो है टीचर को। टीचर पढ़ा रहे हैं कोई टॉपिक, हमें पता है कि स्टूडेंट जान रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। उन्होंने पढ़ा दिया है और स्टूडेंट पता नहीं।
नहीं देखो, टीचर पढ़ा रहा है और उसको लग रहा है कि इनको समझ आ गया, और एक्चुअली उनको बात उन तक पहुंची होती नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं। तो ये थर्ड कैटेगरी में आएगा नहीं, ये थर्ड कैटेगरी का एग्जाम्पल नहीं है। थर्ड कैटेगरी में तो ये था कि टीचर को पता नहीं है something he doesn't know, and teacher also doesn't know that he doesn't know it. आप तो कह रहे हैं कि उसको पता है टीचर को कि इनको समझ आ रहा है, वो मतलब उसकी एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ तो ये है कि उसको पता नहीं है। यस, एनी अदर एग्जाम्पल? Pardon? Once again. Life of another planet. Life of another planet. देखो, life of another planet you don't know. On planet. On planet की लाइफ तो पता ही है। दूसरे ग्रह पे जीवन है नहीं ये पता नहीं। यहाँ पे दूसरे प्लैनेट पे किसी और प्लैनेट यूनिवर्स में है, and another planet is there life? You don't know whether life is there or not, but you are aware that you don't know that there is life available or not. ये तो पता है आपको कि आपको नहीं मालूम है, ये तो आपको मालूम है ना। You are aware that you don't know whether life is there or not. तो सेकंड कैटेगरी का हुआ, थर्ड कैटेगरी का नहीं हुआ। सर एक बच्चे को पुलिस लाइफ के बारे में बताओ। पुलिस मतलब एक बच्चे को जो भी पैदा हुआ है वो बहुत छोटा है, उसको पुलिस लाइफ के बारे में पता होगा, मतलब उसे पता भी नहीं होता और वो यह भी नहीं जानता कि उसे पता नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं। ह्यूमन राइट्स के बारे में ह्यूमन राइट्स के बारे में पता नहीं है, और उनको ये भी नहीं पता कि ह्यूमन राइट्स के बारे में पता नहीं है। हाँ, कैसे? बच्चों को नहीं पता कि उन्हें क्वेश्चंस नहीं आते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं। बच्चों को नहीं पता, उनको क्वेश्चन नहीं आते। बच्चों को नहीं पता कि उनको नहीं पता है क्या क्वेश्चन आने हैं और क्या पढ़ना है, फिर भी उनको आए हुए एग्जाम में तो आए हुए हैं, लेकिन उनको ये अवेयरनेस तो उनके दिमाग में कहीं पता होती कि मुझे नहीं आता। कॉन्फिडेंस तो हरियाणा में हो ही जाता है। हरियाणा की धरती पे आ गए तो कॉन्फिडेंस तो हो ही जाएगा, चाहे कुछ भी रहा था। एक्चुअली इस फील्ड की एग्जाम्पल देना कठिन है, बिकॉज इफ यू नो समथिंग तो फर्स्ट कैटेगरी में आ जाएंगे, इफ यू डोंट नो समथिंग तो सेकंड कैटेगरी में आ जाएगा। हाउ डू यू गेट टू, इसके एग्जाम्पल क्या बनना है? सो दिस इज द एरिया ऑफ ब्लैक स्पॉट्स। अगर मुझे ब्लैक स्पॉट अपने पता हो, मेरे में ये कमी है, तो मैं काम करके उस एरिया में अपने आप को इम्प्रूव कर सकता हूँ। अगर मुझे पता ही नहीं मेरे ब्लैक स्पॉट क्या है, तो मुझे कोई और बताए, या तो मेरा गाइड बताए, कोच बताए कि तेरे में ये कमी है। Are you getting? If I don't know anything about my black spots, how do I work upon that? I am not even aware that there are black spots. If I don't know the black spots and I am not even aware that there are black spots, so such examples could be there. And in this kind of area, the assistance of a guide is called for. A coach is called for. For example, the master blaster, Sachin
to tell him the finer nuances of the game. The batting ऐसे करो, the bowling ऐसे करो. The fine nuances of the game would be told by the coach, because the master blaster himself is pretty great. तो उसको सब कुछ पता ही है काफी कुछ, but the things he doesn't know, he doesn't even know that he doesn't know those things. तो वो फिर गाइड उसको देखकर बता सकते हैं कि तेरे ये black spots. So such is the area which is called area of research. Typically इसमें आपको पता नहीं होता कि क्या करना है. अगर ये बताओ कि ये करना है और आप अभी नहीं मालूम कि कैसे करना, फिर धीरे धीरे आप नॉलेज गेन करके एजुकेशनल सिस्टम के माध्यम से वो काम कर सकते हैं. Alright? So let's wind it up with the promise that we are going to come back to attend another session in which there will be a lot of deliberation on how to write a research paper. Sorry. In a research paper, what should be contained in each section? In each section, what should not be contained and what should be contained in each section of the research paper? और उसमें क्या क्या सेक्शन होते हैं, और भी कुछ बातें करेंगे इंटीग्रिटी, एनरोलमेंट, कम्युनिकेशन के बारे में, जो कि पिलर्स ऑफ सक्सेस बनेंगे आपको लाइफ में आगे जाके. ऑलराइट, थैंक यू सो मच. विद द प्रॉमिस दैट यू आर गोइंग टू कम इवन इन ए ग्रेटर नंबर बट नॉट इन लेसर नंबर. थैंक यू. Thank you so much, sir, for your guidance. It was such an exciting and fun and most importantly knowledgeable session it was. So as I said, what lies ahead is pleasure to chase. It was very exciting line that enthusiasmed me so much. We will continue this session after the lunch. As the time is approaching for lunch, we will gather here again at the same place at 2:30 p.m. sharp. So I request you all to move line wise. Thank you so much. Good afternoon, respected Vice Chancellor, Professor Tankeshwar Kumar sir, Dean of the School of Engineering Technology, Dr. Singh sir, Head of Department of Electrical Engineering, Professor Rajesh Dubey sir, and our today's speaker, Saini sir, and all the participants. I, Azam Khan, from the Department of Electrical Engineering, welcoming you all. It's very delighting to see such enthusiasm in all the participants. We will have learned about research in previous session. What is research and what is not, and how to be a researcher. Now further, we will see it in new perspective. So without wasting the time, I would like to request our chief speaker of the day, Professor Saini sir, to shower us with their knowledge again. Please come. अच्छा खाना खा लिया उसके बाद तो फिर थोड़ा एक नैप होना चाहिए. But anyway, there are constraints, so we are going to live with those constraints. बहुत आवाज है. Slow down कर दो, circulation only is required. इसको slow down करना होगा. स्लो कर दो. स्लो कर दिया. थोड़ा शांति तो भाई. You have from the so far coverage? Any questions that linger in your mind?
You have any questions? No? Okay. So the next slide pertains to in experimental research particularly, there are three principles to be followed. One is called principle of replication. In this, actually, we need to create conditions such that even other people can replicate our findings, can replicate our experiment and find out yes, it is able to be done in that manner. ऐसा ना हो कि हम कोई एक्सपेरिमेंट करें और दोबारा वो हो ही ना सकता हो. It shouldn't happen like that. So principle of replication amounts to repeating the experiment many times over to increase its statistical accuracy. You know that once you do many times an experiment, then statistics start showing up. Okay, and the more you do it, the more statistically relevant becomes the findings. Now, principle of randomization says that the experiment must be designed or planned in such a manner that positive deviations, let us say there is some true value. If you have studied measurement subject, you for one know it that in measurement there is one thing called true value. So true value क्या होती है? You allow all errors to come with the hope that positive errors will cancel negative errors. मान लीजिए सिर्फ positive errors आ रही हैं experiment में. You are doing the experiment in a biased manner, allowing only the positive errors to impinge on the experiment. So negative errors तो आई नहीं. The positive errors will sway the true value onto right side, onto their side. However, if you allow also the negative errors to come up, then there is a considerable hope that positive errors will neutralize negative errors, leaving the true value in place. So that's called principle of randomization. Allow randomness. Actually, randomness amounts to fairness. मान लीजिए मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठा हूँ, and I am not randomly picking up candidates without regard to area. Supposing I am picking up candidates from Haryana, Tamil Nadu, Hyderabad, something like this. Then I am being biased in the matter. So that's not fair. Randomness brings fairness into the process. So allow the extraneous factors to act randomly on the experiment, with the result that positive errors will accommodate in such a manner that the accumulation of negative errors then cancel, leaving alone the true value in place. So that's it. Then principle of local control, the extraneous factors which are impinging on the experiment and which are bringing errors, etc., they should be allowed to happen to the considerable extent possible. ताकि उनका मेजरमेंट भी हो सके. ज़्यादा हो तो मेजरमेंट हो रहेगा, बहुत माइन्यूट हो तो मेजर नहीं होगा. So that is the third principle of local control. Okay, next. ये एक term है paradigm shift, which is quite often used in research. So what do you understand? Have you heard of this term, paradigmatic changes, paradigm shift? What is the meaning? This is my own definition. I haven't picked it from the book. Actually, I have designed my own concept. What is a paradigm shift? My own definition. So any fundamental alteration or a big leap forward in viewpoint, in idea, in concept, technology, product, material, etc. Such a big jump forward that all previous development in the field pales into insignificance, is rendered insignificant, is made dwarf. वो पूरा कंट्रीब्यूशन पिछला बौना बन जाए, बौना मीन छोटा बन जाए, ठिगना बन जाए, इतना बड़ा लीप फॉरवर्ड ले लेगा. जैसे कि लेजर जेट प्रिंटर जब आया तो डीएमटी का क्या बना?
It paled into insignificance. खत्म सा हो गया, कोई इसकी सिग्निफिकेंट ही नहीं रही. DOS ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या बना या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम आया? Paled into insignificance. Such a big leap forward is called paradigm shift. So in a research, you are normally expected to cause paradigm shifts in the state of the art or in the field. You are called upon to make some paradigmatic changes in technology, viewpoint, framework, whatever. Then research is never ever done something based entirely on the past. It's always evolving in nature. जैसे कि fuzzy systems में research जो हमने किया मान लीजिए 15 साल पहले किया तो आज वो relevant नहीं है. Today that's not as relevant. Research done in those times was relevant in those times. But as time progresses, it has to evolve to a new level. Is that clear? Next. It should be futuristic, not necessarily past rigor. It should take a departure from the past, take a break from the past. Okay, some infusing some new spirit altogether. So that's not futuristic. No outdated, no obsolete concepts, no beaten track should be followed. And uncertainty should be a part of the game. One students normally hanker after certainty. Normally वो कहते सर बताओ क्या करना. अरे ये बताना होता तो फिर तो रिसर्च होती ना. ये तो लिखा नहीं है कि क्या करना है, कहीं नहीं लिखा है. Even the guy doesn't know as of then. As of now, he doesn't know. So uncertain environment में रह करके काम करना is a marked advantage with the researchers, or is a fundamental requirement of researchers. Even if the environment is uncertain, still they are happy to undertake work and are able to undertake work. That's the thing. Normally, btech level we have a certain curriculum, certain books, and those books are read. Examination is passed, so everything is certain. If you understand this book, do the numericals of the book, do the prompts of this book, appear in the examination, write well, write in a manner that the examiner can read it. ऐसा नहीं कि आप फारसी में लिखते हैं, examiner को फारसी आती ना हो. So these are the conditions. So if you write in this manner, it is certainty that you will pass. In a research, even if you are doing hard work, you may not be able to achieve results. So more than hard work, some ingenuity, some novelty in the thought process has also to be fired. Then and then only something new can come. Rigor, if you can bless your findings with a mathematical rigor, that's even better because mathematics is a very sound science. Anything based on mathematics would mean it will not be able to be dislodged easily by argumentation. Because of mathematically advanced arguments दी जाती हैं, they are very firmly footed. उनका एक solid basis होता है, reasoning process होता है mathematics. If A is greater than B, B is greater than C, obviously A will be greater than C. So something so if you can bless the entire argument, not just in words you put the argument, you put it mathematically, that is still better, that is even better. Abstraction can be variable. Abstraction actually means the level of detail, the nitty-gritty, okay? So it can be variable. In the entire paper, in such paper that you are writing, you need not entirely put the nitty-gritty or you need not entirely put the framework. So there could be framework, there could be nitty-gritty, both could be there. Different levels of nitty-gritty in the paper. And the moment you capture an idea and you are able to encash the idea in terms of a research paper, immediately extend it to other domains. जल्दी से उसको extend कर लो, नहीं तो और लोग करेंगे. आप नहीं करोगे तो और लोग तो खाली बैठे रहेंगे. There may be smarter people than you, maybe sitting in Korea or in Taiwan or elsewhere. They may be simultaneously pursuing things.
So if you don't extend the idea, by reading your paper, they may extend the idea and they may produce another paper on similar lines and then take it into one. Okay? So immediately extend it to all possible areas wherever you can apply your concept. Alright? You got it? Next. Now this is a fundamental question. How to start research? Beginners के साथ यही दिक्कत होती है, they don't know how to start, कहाँ से शुरू लेना है, कैसे करना है. So that's a basic question with most of us. And survey is the prelude to everything. सबसे पहले survey ही आएगा. So in survey, it's an authentic record of what is done. Authentic means you jot down also something, not just read and forget, read and forget. So authentic record of what is done and what is not done. What is done कैसे पता लगेगा? पेपर को पढ़ लेंगे तो पता लगेगा इस ऑथर ने ये किया, ये प्रपोज करा, ये इसने एक्सपेरिमेंट करे, ये फाइंडिंग आई. Now, after reading a couple of papers, maybe 10 or more, something will conjure up. Something will conjure up in your mind कि मैं ये देखो इसने ये करा और जब इसने ये करा उस टाइम पे तो ये थॉट थी भी नहीं, इसके दिमाग में आई बात ये, तो मैं क्यों नहीं सोच सकता? इस एनवायरनमेंट में रहना है आप. If he could have done it at that point of time, why now at this point of time I can't do it? Slightly different thing. Can't I do it? इस थॉट के साथ जब आप रहेंगे, then something will spring up in your mind. One day, after a couple of days, of this journey, intensive survey, जब आप intensive survey कर लेंगे तो आपके दिमाग में भी कुछ ना कुछ फूटना शुरू होगा. So you build up a case. So that is what not done. उसने नहीं करा लेकिन आपके दिमाग में आ रहा है कि this is possible to be done. Possible है, पक्का नहीं पड़ा. Now case build up, you point out a weak case for not doing something. जो हो चुका वो तो आपने नहीं करना है, तो ऑलरेडी हो चुका. So you build up a case for not doing something. You also build up a case for doing something. For doing something क्या होगा जो नहीं हुआ. Okay. So in the background of this survey, spring up or toy with a few ideas, maybe weird, जिनको हम offshoots भी कहते हैं. Possibilities. Spring up with a few ideas, possibilities, which can be termed as offshoots. In your research, these are called offshoots of out of the papers. So if you spring up with those ideas and you combine those offshoots into one, you synthesize a problem which will be called the problem formulation stage. Right? So you catch them, catch those ideas properly into writing, because otherwise they will wither and wane away. भूल जाएंगे जब भी आइडिया आएगा दिमाग से निकल जाएगा. And pursue them in an environment of uncertainty. Uncertain environment में रह करके काम करते रहिएगा. Something will bear fruit one day. Now possibilities may look initially unreal. शुरू में possibility हो सकता unreal लगे. ऐसे कैसे हो सकता है? फजी सिस्टम से कैसे मशीन कैसे कंट्रोल हो जाएगी फजी सेट्स के थ्रू? ऐसे तो हो ही नहीं सकता. Something may look unreal to you, but if you consistently work there on for some time, maybe 6 months, 4 to 6 months, ये कहा जाता है कि 3 महीने जरूरी है आइडिया को थोड़ा सा तब्दील होने में, एक्चुअल शेप लेने में. So 3 months of work, after 6 months of work, maybe Hari is able to encash the idea fully. So you should rather you should generate seemingly unreal possibilities. जो थोड़े weird लगे, weird, अटपटे लगे शुरू में, ऐसा. जैसे nobody might have thought of currency which is paperless. उसने किसी ने सोचा ना, paperless currency कैसे हो सकती है? भाई currency तो चाहिए है, नोट दो मुझे, अभी तो बात करेंगे. मुझे
somebody might not have ever thought of paperless currency. And then money transfer, पेपर के बिना कैसे पैसे मैं आपको दूंगा नहीं तो आपके पास पैसे कैसे पहुंच जाएंगे? No, at that time thinking might be this. But somebody someday sat and thought, yes, there is a way to transfer money. Actually, information is transferred. Money is not transferred. Information transfer, isn't it? Now possibilities are so raw, so nascent that if not noted swiftly and if not pursued, these will wither and wane away. ये मैंने खुद देखा है, कई बार बहुत अच्छे आइडियाज आते हैं और अगले दिन सुबह उठो तो पता नहीं होता क्या आइडिया है मुश्किल. So immediately scribble something. Sometimes you think of very good communication. अगर वो communication आप करें तो आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल सकता है. किसी भी क्वार्टर के साथ communication करना है तो कई दफा communication आपके दिमाग बड़ा अच्छा फूकता है. मैं ये कहूँगा, मैं लेक्चर में ये बात करूँगा और अगर आपने नोट नहीं करी तो खुद ही भूल जाते हैं. बाद में वो वर्डिंग नहीं याद आती कि किस सीक्वेंस में वर्ड्स मैंने सोचे थे. So it's always better to scribble something, note something down, and then pursue it later. Pursue करेंगे तो फिर reality में तब्दील होगा. Next. कई बार थॉट्स आते ही हैं, लेकिन ये नहीं पता लगता थॉट्स को कंबाइन करके आइडिया कैसा बनाया जाए. थॉट्स आई रैंडम. आइडिया मींस कनेक्शन ऑफ थॉट्स, कनेक्टेड थॉट्स, कपल ऑफ थॉट्स टू गिव अ कंप्लीट आइडिया. तो उसके लिए एक टेक्नोलॉजी है. एक तो है रैंडमाइजेशन. माय वाइफ ऑफन टेल्स मी, मेरी वाइफ मुझे कहती है कि आप रैंडम एफर्ट लगाते रहते हो कहीं भी, कोई आपका सीधा वो नहीं है, टारगेट नहीं रखते. बट आई हैव सीन दैट समटाइम रैंडम एफर्ट्स आल्सो प्रोड्यूस रिजल्ट्स. क्यों? क्योंकि मैंने जेनेटिक एल्गोरिथम्स में पढ़ रखा है कि रैंडमनेस की वैल्यू है, इसलिए मैं रैंडमली एफर्ट भी लगाता रहता हूँ. जैसे एयरपोर्ट में कहीं खड़ा था तो मैंने किसी से बात की तो मेरा एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन हो गया. आई हैड अ बिग प्रॉब्लम इन लाइफ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी मेरे साथ. तो एयरपोर्ट में ऐसे ही खड़ा था, मतलब डिपार्चर हो रहा था, उसने दिल्ली जाना था, मैंने भी दिल्ली जाना था. नहीं, आई वाज गोइंग टू बैंगलोर एट दैट टाइम. तो ऐसे बातचीत करी. आई सेड आई हैव दिस प्रॉब्लम. ही सेड व्हाई डिडंट यू टेल मी द चीफ सेक्रेटरी ऑफ कर्नाटका वाज नोन टू मी अर्लियर. सो माय डॉटर वाज देयर, शी हैड सम प्रॉब्लम एंड द चीफ सेक्रेटरी इज अ बिग शॉट इन द state, in that state. Although he was retired, but he could help us in the matter. तो randomly आप जब तीर फेंकते हैं, हालांकि होप नहीं है कि टारगेट पे टकराएगा, but there is again a hope. There is in nature there is a hope net. और अगर आप जीए का लिटरेचर उठा के देखें और बहुत सारी जो नेचर इंस्पायर्ड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स हैं उनको उठा के देखें तो उनमें कार्डिनल फीचर है रैंडमनेस. Directedness plus randomness both are combined. Directedness plus randomness both are combined to make a algorithm बनाए गए हैं. बहुत सारे algos हैं. एंड कॉलोनी ऑप्टिमाइजेशन है, बहुत सारे 20 algorithm होंगे. तो randomness की वैल्यू है, मैं सुबह भी कह रहा था, randomness has got a role to play in our life. So serendipity means flavor for new ideas and where maybe luck kind of thing play. Luck means randomness basically. So again randomness. You generate ideas, you never know which one will catch you, give you success. There is another technique called scamper which has been coined by these people, and this means S substitute, C for combine, A for adopt, modify, P for put to other users, E for eliminate and R for rearrange. तो स्कैम्पर टेक्निक भी आप अप्लाई कर सकते हैं. इसका एक एग्जांपल अभी देखते हैं कैसे स्कैम्पर को अप्लाई कर सकते हैं. लेट्स गो टू द नेक्स्ट. ये प्लग होता है ना, तो ये सोलर पैनल पीछे जनरेटर ना लगा के सोलर पैनल से भी प्लग आ सकता है. So this is substituting a plug with a solar panel.
or substitute part of the dosa with something else. जैसे मसाले की जगह पे चीज डाल दिया या एग डाल दिया, डिफरेंट काइंड ऑफ डोसा बना सकते हैं. साउथ इंडियन है ना, many of my friends are South Indian. So can you think of making dosa like this? Substituting rather than masala in the dosa, you put some cheese there or put some egg there. Some other kind of dosa can come out. Combine outdoor running plus indoor running, treadmill running. रेन है अगर तो इंडोर रनिंग, तो दोनों कंबाइन कर लो. दोनों आउटडोर रनिंग करो जिससे रेन नहीं है, इंडोर करो जिससे रेन है. ये हो सकता. आइसक्रीम कोन प्लस डोसा, तो हैंड हेल्ड डोसा बन गया. आइसक्रीम कोन होती है ना, उसमें वो गोल सा करके डोसा डाल दो, तो अलग तरह का डोसा बन गया. सो दिस इज कंबाइंड. अडॉप्टिंग गार्ड विद मसल्स, लीन बट विद वेपन और डिटेक्शन आर्मर कैन बी यूज्ड. डोसा शेप्स कैन बी अडॉप्टेड इनटू स्क्वायर. इसको अडॉप्ट कर लिए, जरूरी नहीं राउंड डोसा बनाना, स्क्वायर डोसा भी बन सकता है. या राउंड डोसा विद टू हॉलो आईज एंड ए स्माइली भी बना सकते हैं. मॉडिफाई, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज कर सकते हैं. जैसे पीसी को हैंड हेल्ड पीसी बना लिया, बड़ा पीसी नहीं, हैंड हेल्ड पीसी बन गया, छोटा टेबलेट बन गया, तो मैं मॉडिफाई कर. यूज डोसा मेड इनटू मिनी डोसा, छोटे छोटे से डोसे बना लिए कई सारे, ऐसे भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, पुट टू अदर यूजर्स. जैसे कोकोनट है तो कोकोनट का बाउल बना लिया, पुट टू अदर यूज हो गया. और यूज डोसा सच दैट यूज डोसा एज समथिंग एल्स और चेंज इट्स फंक्शन. लेमिनेट द डोसा एंड मेक ए टेबल मैट. लेमिनेट कर लेंगे तो खराब नहीं होगा, वो वैक्यूम हो जाएगा. वैक्यूम में तो चीज खराब नहीं होती. आपने देखा होगा एयरपोर्ट्स वगैरह पे वो लेमिनेट करके रखा होता है. वैक्यूम कर लो, उसके अंदर वैक्यूम कर लो तो खराब नहीं होगा, बहुत दिन तक खराब नहीं. एलिमिनेट, फुटबॉल ऑन द ग्राउंड तो खेलते ही थे, फुटबॉल कंप्यूटर पे खेल लो. जैसे कि गेम्स आ गई ना, हालांकि अच्छे नहीं है वो, बहुत ज्यादा अच्छे तो नहीं है, नॉट गुड, क्वेश्चनेबल है, बट एलिमिनेट तो कर दिया ना, ग्राउंड एलिमिनेट हो गया. एलिमिनेट प्लेट्स फॉर हैंड हेल्ड डोसा. प्लेट्स खत्म कर दो, एलिमिनेट कर दो, हैंड हेल्ड डोसा इस्तेमाल कर सकते. ये तो आपको एग्जांपल रीअरेंज करना है. रीअरेंज पिक पिक्चर डाउन, पिक्चर ऐसे दिख रही थी, उसको उल्टा किया, वो भी एक और पिक्चर बन गई. देखा होगा आपने, गाड़ी जो है ना बाल बन जाएंगे और जब भी पिक्चर ऐसे उल्टा करेंगे पिक्चर ही लगे. इसी तरह से क्वांटिटीज ऑफ इंग्रेडिएंट्स इन ए डोसा, इनको रीअरेंज कर दो. थिंक ऑफ ए नॉवल काइंड ऑफ डोसा, ऐसा भी बना सकते हैं. राइट, सो दिस इज कैम्पर. इन सब चीजों को आप अपने सब्जेक्ट्स में भी ट्रांसलेट करके देख सकते हो कि क्या क्या चीजें रीअरेंज करनी है. कुछ सर्किट यहाँ कैपेसिटर लगा रहे, इसको कैपेसिटर को हटा के यहाँ लगा रहे, इसको यहाँ से हटा के इधर लगा रहे, तो क्या नया फंक्शन कुछ बन जाएगा. एंड वी एक्चुअली डिड दिस विद द हेल्प वी व्हाट वी डिड वाज वन ऑफ माय स्टूडेंट्स इन पीएचडी. हमने एक इक्वेशन लिया, इधर तो रेज टू द पावर्स, कुछ रेज टू द पावर ले लिया, x क्यूब, x स्क्वायर, x5 ले लेंगे, x5 x10 से चलेंगे, x10 से लेके x तक, प्लस 1/x प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/x क्यूब. 1 नहीं बल्कि उधर ये कोएफिशिएंट ले लीजिए, a x रेज़ टू 10 b x टू पावर 9 इस तरह, और प्लस करके फिर b डिवाइडेड बाय x प्लस c डिवाइडेड मतलब b9 पावर b11 डिवाइडेड बाय x प्लस b12 डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इस तरह. When we apply DA there on, हम उस फंक्शन को ऑप्टिमाइज करते हैं. ABC दिए डोमेन, जो फंक्शन हमें चाहिए था उस डोमेन के लिए वो DA ने बना दिया. तो इस फंक्शन को ऑप्टिमाइज कर सकते हो. एक ऑप्टिमाइजर बैठा दो ऊपर, नीचे फंक्शन रखो, उसको ऑप्टिमाइज कर देगा. So many optimizers are there. So what I all need to say is, तो ये सारी चीजें हैं. हमने जो स्कैम्पर, एक्चुअली स्कैम्पर वहां लगाया, इस
प्रोसेस में स्कैम्पर ही लगा, तो कुछ एलिमिनेट कर दो, कुछ जी अपने आप एलिमिनेट करेगा, कुछ जैसे एज एंड बीज में से जैसे बहुत लो वैल्यूज असाइन करी, उसको ज़्यादा कर दी, अपने आप को उसने फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर दिया। तो this can be actually applied and we did apply it. Next. Now ये भी एक क्वेश्चन होता है कि पढ़ तो लिया मैंने 20 पेपर पढ़ लिए, मैंने ऑफशूट भी जनरेट कर लिया, अब क्या करूँ? तो ये नहीं समझ आता कि अब करें क्या। आइडिया तो सारे आ गए, नए आइडिया भी फूटने लगे, कुछ दिमाग तो चलने लगा, लेकिन करना क्या है, आगे क्या करना है ये तो बताओ। अब सर क्या बताए, सर को खुद नहीं पता। सर कैन ओनली पार्टिसिपेट इन दी डिस्कशंस, he can put you questions, he can grill you and all that he can do, but ये नहीं बता सकता कोई भी गाइड के आगे क्या करना, आगे की जर्नी तो आपको तय करना। So what happens? One of the things which I personally found pretty helpful is redoing an already done work, but not entirely. ऐसा नहीं पूरा पेपर रीडू कर लेना, उसका कोई पर्पज नहीं, जस्ट फॉर गेटिंग फुट होल्ड। जैसे आप दौड़ते हो, जो स्पाइकर्स होते हैं, जो शॉर्ट रेस लगाते हैं, क्या उनके पैरों के नीचे क्या होता है? स्पाइक्स, गेट ए फुट होल्ड, जस्ट टू गेट ए फुट होल्ड एंड डिपार्ट अलॉन्ग वन्स ओन जर्नी, वी टेक हेल्प ऑफ स्पाइक्स। उसी तरह से यहाँ पे पेपर को रीडू करना शुरू करना है, तो 10 से लेके 10 से लेके 30-40% तक उसको रीडू करेंगे, अब तो 40%। आर यू एबल टू लिसन मी? यस। सुनाई दे रहा? यस। कितना परसेंट करना है? 10 से लेकर के 40% तक पेपर को रीडू करेंगे, सो विल बी एबल टू प्ले विद द कॉन्सेप्ट्स, निटी-ग्रिटी भी थोड़ी पता लग जाएगी, कैसे सिमुलेशन मॉडल कैसे तैयार करना है ये सब। And then our mental side use will be catching up, थोड़ा strong होते जाएंगे mental side use पर, and one day we will be able to take our own journey, अपनी जर्नी ले पाएंगे, provided हमने mental side use अपने strong कर लिए हैं। तो are you getting? So the intention of redoing a paper is not actually redoing the entire paper, only to go get a foothold. तो पेपर्स हमने पढ़ लिए सारे, आइडिया भी लग गया कि क्या करना, नया क्या करना, लेकिन वो करना कैसे है इसका नहीं पता चलता कैसे किया जाए। तो कोई पेपर अच्छे मेटल का, अच्छे स्ट्रेंथ का पेपर उठा करके उसको रीडू करने शुरू करेंगे, एंड देन यू टेक डिट्यूर, उसको कर रहे हैं, देन यू टेक ए डिट्यूर, वहाँ से पीछे हट जाओ, थोड़ा सा जर्नी अपनी अलग बढ़ लो। ऐसा नहीं कि पूरे पेपर को किए जाना, किए डार्क पेपर करने की जरूरत नहीं, ओनली इंटेंशन इज टू गेट ए फुट। ये बिल्कुल उस तरह से है जैसे कि मुझे न्यूमेरिकल नया नहीं करना आता है, तो मैं क्या करता हूँ, पहले तो डन न्यूमेरिकल करता हूँ, ऑलरेडी किया हुआ है बुक के अंदर, मैं उसको करता हूँ। उससे क्या होता है, उससे मेरे मेंटल साइंस स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं और चीज़ें पकड़ में भी आ जाती हैं, और फिर मैं जो नॉट डन न्यूमेरिकल है वो कर पाता हूँ। एग्जैक्टली लाइक दैट, हाँ वैसे get a foothold and on the exploratory journey begin to depart along one or the more offshoots that you have generated. फिर offshoots का रास्ता तैयार कर लो, फिर तो उड़ारी आपकी भरनी शुरू हो जाएगी, अपनी उड़ारी भरेंगे आप। Next. Now, once you have done the work, then comes up the question of encashment. Encashment तब होता है जब आप पेपर्स पब्लिश करते हो, जब पेटेंट पब्लिश करते हो। Till then, your work is unknown to the community, to the research community, to the world across. किसी को नहीं पता कि आपने क्या काम करा। The moment you write a paper, you allow it to be reviewed by reviewers. आप जो criticism आने देते हैं, जो criticism आता है, उस पर भी काम करते हैं, तो काम आपका और निखर जाता है उसी बहाने से। That process
is actually enshrined in IEEE guidelines to authors. बहुत डिटेल में उन्होंने दिया और मैं खुद भी दूंगा आपको डिटेल में कुछ कि कैसे हर एक पेपर के सेक्शन होने चाहिए। उसके बाद आपका पेपर का रिव्यू आएगा, रिव्यूअर्स के कमेंट आएंगे। तो कमेंट्स कैसे होते हैं? समटाइम्स वेरी डिस्करेजिंग कमेंट्स आर देयर, बहुत डिस्करेजिंग होते हैं, उससे लगता है मैंने कुछ भी नहीं करा। 20-30 कमेंट्स आएंगे लगातार, 30 कमेंट्स आ जाएंगे, 40 कमेंट्स आ जाएंगे। एक पेपर मैंने रिव्यू करा तो मैंने 50 कमेंट्स भेज दिए, मुझे खुद ही लगा इतने ज़्यादा कमेंट भेज दिए, बेचारा मर ही ना जाए। तो ये जो कमेंट्स आते हैं इनका ये मकसद नहीं होता कि आपकी टांग खींचना है या आपको पीछे खींचना है, ऐसा मकसद इनका नहीं होता है, बिकॉज वो तो जानते भी नहीं होते आप कौन है। वो तो बेस्ट इंटेंशन ये होता है कि पेपर को डिफाइन हो जाए। इनफैक्ट जिसको 50 डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो वैसे बताना तो नहीं चाहिए, चलो बता देता हूँ। किसी के फादर ने फोन किया था कि मेरे बेटे का या बेटी का पेपर आएगा, उनका रिव्यू कर देना। अब वो जो बंदा था वो उसका अच्छा स्टेचर था उसका, तो मुझे लगा इतना बड़ा आदमी ये एचओडी रह चुका, डीन रह चुका, इसकी बेटी का पेपर है और ये हल्का अगर निकल गया तो धब्बा तो रिव्यू करने वाले को लगे इसने तो गंद डाल रखा, जो डाल रखा, मेरे ऊपर और धब्बा लगेगा। तो मैंने और अच्छे से उसको छांट के ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट दिए ताकि पेपर निकल जाए। आज इसने इंटेंशन मारी थी क्या बताओ? मेरी इंटेंशन गलत थी क्या? मेरी इंटेंशन तो ये थी कि पेपर में कोई खामी रहे ना। तो इंटेंशन रिव्यूअर का यही होता है कि पेपर में कोई खामी ना रहे, जो पेपर निखर के आए, बेस्ट पेपर निखर के आए, ये इंटेंशन होती है। आर यू गेटिंग? समझ पा रहे हैं? जो बीटेकर्स हैं हम ऐसा सोच सकते हैं कि अगर टीचर एग्जाम में वो लाल पेन से मार्किंग कर रहे हैं, काटाकुटी कर रहे हैं, तो आप किसके लिए कर रहे होते हैं? वो आप ही के लिए कर रहे होते हैं, isn't that? So criticism is never to be perceived as if someone is pulling your legs down. ऐसा नहीं सोचना। Even at the risk or cost of being misunderstood, हालांकि वो मिसअंडरस्टूड भी हो सकते हैं, तो इतना ज़्यादा गंद डाल दिया उन्होंने, आपके पेपर को काटा पीटा कर दिया, they can be misunderstood also. Even at that risk, they are taking that risk and still making some corrections. They venture into an exploratory correctional or suggestive phase. ये intention उनका रहता है। Next. This is some of the motivation for writing research papers, almost similar to why we should undertake research. उसी तरह का है, you can just go through it. पेपर पढ़ लो। पेपर्स क्यों लिखने चाहिए? इसके बारे में just go through it. They also allow you a clearer expression and improve the quality of writing. जैसे आप पेपर लिखते हो तो ऑनिंग होती है, आपकी एबिलिटी ऑफ राइटिंग भी ऑन होती है, चेजल होती है। Capacity to write also improves as you keep writing papers. मैंने खुद देखा है इस बात को कि जो फर्स्ट पेपर था हमारा, उसको लास्ट पेपर से कंपेयर करते तो there is a lot of difference in the writing process itself. Now publisher publishes papers in two modes. One is called subscription mode, the other is called open access mode. दो मेन मोड हैं जिसमें पेपर पब्लिश होते हैं। सब्सक्रिप्शन मोड में द बायर और द सब्सक्राइबर, जैसे लाइब्रेरी सब्सक्राइबर हो सकती है, बायर आप खुद भी हो सकते हो, आप खुद भी सब्सक्राइब कर सकते हो जर्नल को।
It could be individual or it could be library. They bear the subscription cost of the journal copies. Alright, clear? There is another mode which is called open access mode, in which the contents are freely accessible to anybody in the world. And who pays for the publishing costs? The author. Per page. Per page he will bear the charges, and anybody else need not pay anything. They can freely access it. Open access mode. Is that clear? Who pays for the open access? The author. Author pays for the open access journal. To my mind, मैं प्रोटेगनिस्ट हूँ इस बात का कि ओपन एक्सेस मोड जिसमें ऑथर को कुछ पे करना चाहिए, हमें पब्लिश नहीं करना चाहिए। हालांकि इस पे व्यू पॉइंट लोगों के अलग अलग आते हैं। वो कहते हैं उसमें क्या है, उसमें ऑथर पे कर रहा है, उसमें सब्सक्राइबर पे कर रहा है। प्रॉब्लम ये आती है कि मोस्ट ऑफ unscrupulous publishers have come up who will charge something from you and overnight publish the paper, or within 2-3 days, within a week, within a month, they'll publish the paper, and that's not the requisite time. Actually, time ज़्यादा लगता है paper publish, क्योंकि reviewer जो हैं वो 1 से लेकर 6 महीने तक रिव्यू ले सकते। रिव्यू टाइम 1 महीना तो रिव्यू का टाइम वैसे देते हैं, फर्स्ट इंस्टेंस में देते ही हैं रिव्यूअर को। कोई रिव्यूअर बिजी है, वो वापस करेगा, फिर दूसरे रिव्यूअर को जाएगा, 1 महीना वो ले सकता है, तो 2 महीने हो। तो कायदे से मेरा मन नहीं होता है कि आप ओपन एक्सेस जर्नल में पब्लिश करें। पर्टिकुलरली अगर वो जर्नल जल्दी पब्लिश करता है और सारे पेपर्स को पब्लिश कर देता है विदाउट हाई रिजेक्शन रेट, द हायर द रिजेक्शन रेट द बेटर इट इज। अगर 100 पेपर सबमिट करे, उसमें से 90 उसने रिजेक्ट कर दिए, 10 पब्लिश करे, तो वो जर्नल बेटर है। ऐसे जर्नल में पब्लिश करना क्रेडिबल है। लेकिन ऐसे जर्नल में आप पब्लिश कर रहे हैं जहाँ सारे पेपर जितने में सारे पब्लिश हो रहे हैं, it marks your core credibility. So in general, we'll have following topics in the research paper. One is the title. You just scan through it. You can take it. देख लिया सर, रेडी? Now, about title, let us see what is to be done with regard to title. During survey or otherwise, the first contact that any prospective reader makes with a paper is via title. सबसे पहले किसको देखता है वो? टाइटल को देखता है। So title should be crisp, captivating, and summing up the entire paper. ऐसा होना चाहिए। पूरे पेपर को सम करते हैं, निचोड़ के पूरे पेपर को एक टाइटल में हमने पिरोना है। Next. Now in today's digital world, there are web information retrievals engines or search engines. Through keywords, you can search some titles. तो उस पेपर टाइटल के अंदर sufficient keywords भी होने चाहिए to improve the discoverability of your title. Is that clear? अगर लंबे टाइटल हैं तो वो जैसे आप आजकल सोशल मीडिया पे भेजते हो या ट्विटर के माध्यम से शेयर करना चाहते हो, कैसे और शेयर करना चाहते हो, तब तो शॉर्टर टाइटल चाहिए। और लॉन्गर टाइटल है तो कीवर्ड्स ज़्यादा आएंगे। सो ए ट्रेडमार्क हैज टू बी हैड बिटवीन द शॉर्ट टाइटल एंड द लॉन्ग टाइटल। इसमें ट्रेडमार्क आपको अरेंजमेंट करना पड़ेगा।
सो इस तरह के IEEE एक्सप्लोर है, एशियन पोर्टल है, माइक्रोसॉफ्ट एकेडमिक सर्च है, गूगल स्कॉलर है, साइंस डायरेक्ट है, ये सारे सर्च करते हैं. They are able to bring out the titles of the papers. Okay, and for them, they rely on keywords in the title. So there should be sufficient keywords in the title. Whereas अगर बहुत लंबा पेपर है तो फिर उसको ट्विटर पे या दूसरे माध्यम से शेयर करने में दिक्कत होगी. इसलिए एक बैलेंस स्ट्राइक करना पड़ेगा टाइटल में, इतना रखें ज़्यादा छोटा भी ना हो, ज़्यादा बड़ा. टिपिकली और तीन तरह के टाइटल होते हैं: नॉमिनल, कंपाउंड एंड फुल सेंटेंस टाइटल्स. कॉमनली यूज आर नॉमिनल टाइटल्स व्हिच कैप्चर इन ए क्लॉज. क्लॉज मींस पार्ट ऑफ द सेंटेंस. द मेन थीम ऑफ पूरे थीम को क्लॉज में डाल दिया. कंपाउंड और हैंगिंग टाइटल्स यूज ए कोलन with two phrases, one side colon से पहले, एक दूसरे साइड का colon के बाद में. So that is called compound or hanging title. And less common are full sentence title. Full sentence title normally use नहीं करते. Okay. Quotation marks हो सकते हैं टाइटल में, but semicolons कभी नहीं होंगे. Semicolons. Colons can be there. This is colon. Okay. And this is Semicolon. Colons can be there because separating the two parts of a sentence clauses. एक phrase इधर रहेगा, एक phrase इधर रहेगा. बीच में colon ना. Alright? Yes. This can be there. Now. previous slide. इससे पहले वाली slide. पहले वाली. ठीक है. पैरेंथेसिस भी हो सकते हैं, ब्रैकेट्स हो सकती हैं, ऑलराइट. स्लैश नहीं हो सकते. नेवर सेमीकोलंस एंड स्लैशेस विल नेवर बी देयर इन ए टाइटल. ये आप चीज नोट कर लें. नो सेमीकोलंस, नो स्लैशेस. Colons can be there, parentheses can be there, commas can be there, comma can also be there. Interrogative हो सकते हैं, yes, interrogative भी हो सकते हैं, लेकिन लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं डाला होगा. इस चीज का ध्यान करें. जैसे एक टाइटल है हाउ मेटाबॉलिज्म जनरेट सिग्नल्स ड्यूरिंग immunity and inflammation, but there is no question mark. And interrogative. Nature of this sentence is interrogative, but without a question mark. टाइटल लिखा कैसे जाता है? पहले तो आउटलाइन पेपर का तैयार कर लें. पूरे पेपर में क्या चीजें की हैं. Prepare a draft and then revise it many times. जैसे पेपर को ड्राफ्ट तैयार करके many times रिवाइज करके पेपर तैयार होता है, उसी तरह टाइटल भी ड्राफ्ट तैयार करके फिर many times उसको रिवाइज करके फिर जाके टाइटल आपका तैयार होगा. और अगर ज्यादा ऑथर्स हैं तो सारे ऑथर अपना अपना टाइटल दें, ताकि सबका टाइटल मिक्सअप करके एक बढ़िया टाइटल बना सकें. इसलिए वे फॉर मल्टी ऑथर पेपर्स ऐसा बना सकते. कोई एक्स्ट्रा वर्ड्स हों वो निकाल देने हैं. प्रूनिंग, रिमूवेबल, रिडंडेंट वर्ड्स हैं वो सारे निकाल देने हैं. जो वर्ड्स नहीं चाहिए हर एक वर्ड को रिमूव करके देखें कि सेंस तो नहीं लॉस्ट हो रहा, सेंस तो नहीं लॉस्ट हो रहा. जो रिडंडेंट वर्ड्स हैं, जो रिमूवेबल है, उनको रिमूव कर देना. वो बनेगा आपका टाइटल. Strict, pithy, concise. Next. As I already told you, shorter titles look good. Take lesser time to read, and particularly on mobile devices can be transmitted on the communication platforms such as Twitter, etc. Shorter titles को communicate easily कर सकते हैं.
लॉन्गर टाइटल्स में कीवर्ड्स ज़्यादा होंगे तो सर्च इंजन में आ जाएगा, आपका पेपर की डिस्कवरेबिलिटी बढ़ जाएगी। सो ट्रेडमार्क हैज टू बी हैड। नंबर ऑफ जो वर्ड्स इन ए टाइटल 2 से लेकर 24 तक हो सकते हैं। ऑन एन एवरेज 10 वर्ड्स हो सकते हैं टाइटल के। ये जनरल सब अप्रॉक्सीमेट सब। What a title should not contain, as I already told you, semicolons, slashes, नहीं होने चाहिए, और complete sentences को अवॉइड करना। Complete sentence नहीं, phrases, clauses हो सकते हैं। Next. Names of the authors. जनरली जो आपके मेट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में नाम है वो रखा है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंट्रीब्यूशन। सबसे पहले उसका नाम जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है उसका नाम, तो लेवल ऑफ कंट्रीब्यूशन कम होता जा रहा है, उसी लेवल में उनके नाम आएंगे। अगर एमटेक पेपर है या पीएचडी पेपर है तो नॉर्मली कैंडिडेट का नाम पहले आता है और गाइड का नाम बाद में। बट सम पीपल ट्राई टू प्ले क्वाइट स्मार्ट आल्सो। वो क्या करते हैं, गाइड का नाम पहले डाल देते हैं, थिंकिंग के गाइड का नाम है एकेडमिक सर्कल्स में और मेरा पेपर जल्दी पब्लिश हो जाए, गाइड का नाम आगे रखते हैं। कई बार ऐसे गाइड होते हैं वो बहुत वेल नोन होते हैं, उनका नाम ही चलता है। सारा नाम बड़ा चलता है, इससे बड़ा कुछ क्या है, गाना सुना होगा नाम बड़ा नाम चला था। सो उनका नाम चल रहा होता गाइड का, तो गाइड का नाम पहले डाल देते हैं। बट दिस इज काइंड ऑफ ट्रिक ऑफ द ट्रेड, इसमें मैं ज़्यादा प्रतिक्रिया भी नहीं दूंगा। नॉर्मल पैटर्न ये है कि स्टूडेंट का नाम पहले, गाइड का नाम बाद में। और 2-3 गाइड हैं तो जो जिसका कम कंट्रीब्यूशन हो पहले वो बाद में आएगा, जिसका ज़्यादा कंट्रीब्यूशन पहले आएगा। Clear? Author affiliations have to be complete with the designation, organization, district name, country, email, etc. और कुछ जर्नल ऐसे हैं वो एब्रीविएशन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जैसे आपने लिख दिया CUH, वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे, पूरा लिखना पड़ेगा उसको। और ऑथर्स का कंट्रीब्यूशन जो है सिग्निफिकेंट होना चाहिए इन दीज एरियाज, आइडियाज में, कंसेप्चुलाइजेशन में, इन सब एरिया में, ड्राफ्टिंग में, फाइनलाइजेशन में, किस जर्नल को भेजना है वो सिलेक्शन में भी उन्होंने कंट्रीब्यूट किया हो। नेक्स्ट, देयर कैन बी कीवर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम 4 to 6, 4 से लेकर 6 तक कीवर्ड्स हो सकते हैं, बट नॉट मोर देन 10 in any case. Keywords are used not only by search engines but also by bookmarking services. So it's appropriately they enhance the discoverability of the paper. And next, sometimes in the entire paper lot of figures, lot of symbols crop up, lot of abbreviations, acronyms. Abbreviation और acronym में क्या अंतर है? Acronym is actually, मैंने एग्जाम्पल भी दी पीछे चलिए। UNESCO, we don't pronounce it as UNES, ऐसे नहीं pronounce, UNESCO pronounce करते हैं। NATO we pronounce it as laser, radar, AIDS, they're all acronyms. These are abbreviations, UK, USA, CBI. Okay, record restriction है छोटा सा. Abbreviation may include only the first letter from the words, may not include. Sorry, this is SAINT Act. The abbreviation है SAINT का, लेकिन जरूरी नहीं कि first letter ही इसमें include करेगा. इसमें first और last. डॉक्टर में
बी एंड आर इस तरह से इंक्लूड हुआ है। तो ये दो डिस्टिंक्शन है एक्रोनिम में और एब्रिविएशन। नेक्स्ट प्रीवियस हाँ, तो बहुत सारे जो सिंबल्स आ रहे हैं बार बार आ रहे हैं, तो सब जगह थोड़ी उनको एक्सपेंड करते रहेंगे। तो एक नोटेशन सेक्शन पहले बना लिया जाता है, जो सिंबल्स उसमें दर्ज किए जाते हैं उनकी एक्सपेंशन कर दी जाती है। वो सेक्शन एक वन ऑफ द सेक्शन रहता है। नेक्स्ट Abstract is the most concise section of the paper. Pithy means succinct, very precise section, summing up the entire paper into one paragraph. And remember, abstract is never more than one paragraph. It's always just one paragraph. सिर्फ एक पैराग्राफ रहता है, and it has to be very precise. सारे पेपर को इसने निचोड़ के इसमें डालना है और साइमल्टेनियसली इसमें डिटेल नहीं होना चाहिए, निटी-ग्रिटी। कोई भी निटी-ग्रिटी की बात इसमें नहीं लिखी होनी चाहिए। एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग ये होता है, एब्स्ट्रैक्ट का मीनिंग होता है कि लार्जर पिक्चर बिल्ड करके हम ऊपर ले आए, ऊपर से देख रहे हैं तो निटी-ग्रिटी थोड़ी दिखती है। जैसे बहुत ऊंचा आसमान में पक्षी होता है तो उसको छोटा छोटा चीज दिखता है, नहीं दिखता, उसको क्या दिखता है? एब्स्ट्रैक्ट पिक्चर दिखती है। तो एब्स्ट्रैक्ट मीन्स पूरा उसको निचोड़ करके इसमें क्या क्या चीजें हो सकती हैं। एक तो नीड फॉर फर्दर रिसर्च और बरीफ में proposed methodology, results and comparison, very brief. Everything has to be brief. All these things have to be very brief. And what it should not contain is this thing. Citation नहीं होने चाहिए इसमें. No citations. Abstract में एक भी citation नहीं होना चाहिए. No citations. Okay. Introduction में citations हो सकते हैं. So, this part clear? Okay. Abstract will contain no citation, one paragraph or 250 words का हो सकता है one paragraph. ऐसा नहीं कि one paragraph 2 पेज का बना दिया, ऐसा भी नहीं होना चाहिए. About half a page. About half a page. So can you take a break? Yes, sir. Okay. तो क्या ब्रेक दिया जाए? नया ब्रेक देना है. Every time new break. Laughing break कर सकते हैं. Yes. अच्छा idea. So you can laugh or let it be singing, laughing, जो भी आपका मन करता है वो करते हो. You can take a break. और हो सकता है मेरे जैसे गाना ना आता तो गुनगुना सकता है, तो गुनगुनाने का ब्रेक भी कर सकते हैं. सुबह पीछे नहीं हुआ अभी. पीछे नहीं हुआ अभी. रेफरेंसेस होने चाहिए, नो रेफरेंसेस. और क्या नहीं होना चाहिए? ग्रेटिविटी, नो डिटेल. और कितना हो सकता है? 2-3 पेज का हो सकता है. ओनली वन पैराग्राफ, मे बी हाफ ए पेज ऑल्सो. Introduction basically will gently usher the audience into the topic. Gently usher का meaning होता है कि धक्का नहीं दे देना. धक्का देके किसी को फील्ड में नहीं डाला जाएगा, उसको gently usher किया जाएगा into the field. So soft, पहले soft ushering होगा, then nitty-gritty detail आती जाएगी. पहले मोटा-मोटा detail,
ठीक है, मोटा मोटा सा बात की जाएगी, जेंटल अशरिंग इसी को बोलते हैं, एंड देन यू स्टार्ट कमिंग टू नेटिविटी ऑफ इट. So I will point out the major gaps or the shortcomings in the previous research. ये बताई जाएंगी. In the light thereof, what is your proposed methodology? What is your proposed idea? वो बताया जाएगा. ठीक है, पहले literature survey और what has been done and what has not been done. Offshoots coming in from उनकी बात की जाएगी. And then finding out the possible offshoots from a bunch of papers. Then you knit all those offshoots into one statement that will be called as problem formulation. And then you protect the current state of the art and probe for possible future scenarios also. Towards the end of the introduction, you will also find out कि ये और भी हो सकता है. Next. Generally, this section will wind up with a brief, but a more detailed than abstract. Abstract में भी वही बातें हैं. Proposed methodology, results, comparison, highlights of novel contribution. Actually, the novelty of the work is pointed out at 3-4 places. Abstract में, introduction में, main body में, और results में. 4 जगह novelty को आपको लिखना चाहिए. 4 places, but at different lengths. कहीं ज़्यादा डिटेल में, कहीं more precise करना. What an introduction should not contain nativity of the work done, detail of the results, analysis thereof. ये सब नहीं आना चाहिए introduction. Next. Theory and experimental method. This is generally the largest section of the paper. इसमें entire theory आप present करेंगे, and prior to that, अगर आपको लगता है to understand the theory, some background is also to be covered. So some preliminary section can also be there, where preliminaries will be dealt with. For instance, in fuzzy systems research, when fuzzy systems area was new, then fuzzy set introduction, fuzzy logic introduction, etc. was given in preliminaries section. तब वो नई बात थी, set theory नई बात थी, fuzzy set theory. उसको preliminaries में डाल दिया. इस तरह से उसको एक सपोर्ट मिलता है लीडरशिप को पढ़ने के लिए एंटायर पेपर. सो प्रिलिमिनरीज, देन द मेन टेक्स्ट एटसेट्रा विल कम डाउन. सो वी विल आल्सो पॉइंट आउट अ वीक केस फॉर नॉट अटेम्प्टिंग व्हाट हैज ऑलरेडी बीन डन. ओके, ऑलरेडी बीन परस्यूड इन द स्टेट ऑफ द आर्ट एंड सिस्टमैटिकली बिल्ड्स अ स्ट्रांग केस फॉर द न्यू थ्योरी बीइंग प्रपोज्ड. New idea, framework, methodology, flow charts, algorithms, experimental work, proceed one by one. ठीक है, कुछ इसमें replication भी हो सकता है. Slide. Next. Then adequate space is devoted to present the design issues and then the implementation issues. उस पे काफी length पे चर्चा होगी, जो design issues हैं, implementation issues हैं. And then case study if done may also be presented. Generally, this section will wind up by highlighting in detail the novelty present. Novelty पहले भी मैंने बताया, abstract में, introduction में भी आई है. यहाँ पूरी डिटेल में novelty का protection होगा. ये हमने नया किया. ये hitherto not done था. Not done hitherto, but now we are doing it. And what it should not contain is conclusion and future directions. The main body should not contain it because there are separate sections for that. This section starts spelling out this test results, analysis and discussion section. This will spell out the testing conditions. Now testing conditions should not be mundane or trivial. Ordinary नहीं होना चाहिए. ऐसी टेस्ट कंडीशंस होनी चाहिए जो सिस्टम को वाकई स्ट्रेच करे, सिस्टम को वाकई टेस्ट करे. So supposing you propose very light testing conditions, और आप कहते मेरा कंट्रोलर तो बहुत बढ़िया चलता है. अरे कंट्रोलर तो चलेगा ही जब आपने डिस्टर्बेंस दी ही नहीं. तो अच्छे से डिस्टर्ब करके देंगे. उसकी टेस्टिंग कंडीशन में सेट पॉइंट चेंजेस हैं, बहुत तरह के चेंजेस हो सकते हैं. लो डिस्टर्बेंस है, रैंडम डिस्टर्बेंस है, स्वीयर डिस्टर्बेंस है. सब तरह की डिस्टर्बेंस देके जब टेस्ट करेंगे कंट्रोलर को, तब तो माना जाएगा कि हाँ आपका कंट्रोलर अच्छा है. ओके, एंड मेनी टाइम्स
स्टॉपिंग क्राइटेरिया नहीं दिया जाता, कन्वर्जेंस क्राइटेरिया नहीं दिया जाता. So all these things need to be put forth in the result analysis and discussion section. And sometimes the researchers will plot a few curves. एक दो curves plot करे और एक qualitative remark उनके बारे में दे दिया. तो ऐसा करने से कोई पर्पस हल नहीं होता है. रादर उनको क्वांटिटेटिवली नेट करके, जैसे ISC है, इंटीग्रल स्क्वायर एरर है, जब पीक ओवरशूट है, टाइम रिस्पांस मैट्रिक्स हैं, फ्रीक्वेंसी डोमेन मैट्रिक्स हैं, उनमें अगर आप देते हो रिजल्ट्स को तो दे आर बेटर yardsticks being provided for comparison. Qualitative remarks serve no purpose. ये अच्छा है, ये खराब है, इससे कोई पर्पस हल नहीं होता. So better to give some mathematical metrics about the results. Mathematical metrics. Simulation experiments etc. may be projected under different conditions. और मल्टीपल ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, कलर ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, जब उनके लिए रीजन लगा करके अलग अलग सिंबल यूज करके मल्टीपल ग्राफ्स प्लॉट कर सकते हो, टेबुलर फॉर्म में डेटा दे सकते हो, टेबल्स विद इन टेबल्स एम्बेड करके हायरार्की ऑफ टेबल्स बना के बहुत सारा कंपैरिजन आप उसमें दे सकते हो. नाउ एक चीज बहुत ध्यान रखें, जब कहीं ग्राफ प्लॉट करना होता है तो 6 से 8 रीडिंग कम से कम चाहिए. 2-3 रीडिंग का ग्राफ नहीं बनता है, बिकॉज हम चाहते हैं कि पूरा उसका बिहेवियर सिस्टम का कैप्चर किया जाए. सो एज आई टोल्ड यू 10 इज द स्मॉलेस्ट लार्ज नंबर अकॉर्डिंग टू थ्योरी ऑफ लार्ज नंबर. सुबह बताया था ना, तो 10 इज द स्मॉलेस्ट लार्ज नंबर. तो 10 रीडिंग हो तो ठीक है, एटलीस्ट 6 to 8 रीडिंग्स जरूरी है. ना रीडिंग्स तो आ गई, अब रीडिंग्स आ रही है एग्जैक्ट. मान लीजिए एक रीडिंग यहाँ है, one reading is here, another here, another here, another here, another here, another here. What did you suggest? How should I draw the graph? Should I draw the reading points? No. Never ever draw a graph by trying to connect all the points. That's not my intention. Actually, due to experimental errors, systems are actually well behaved. Normally, systems are assumed to be well behaved. And why these different readings are coming are due to experimental errors or other factors, extraneous factors impinging on the experiment. बाहर की कोई डिस्टर्बेंस हो सकती है, कोई मान लीजिए कोई ट्रक गया, उसकी वाइब्रेशन हो गई, नियर बाय कोई रेलवे लाइन है, कोई हाई वोल्टेज लाइन, उसका इम्पैक्ट आ सकता है एक्सपेरिमेंट. तो ये मानते हुए कि ये ऑफ द वे है, ये एक्चुअल रीडिंग नहीं. So what should be done is an attempt should be made to pass a smooth curve. पहले तो smooth होना चाहिए, zigzag नहीं होना चाहिए. Pass a smooth curve in trying to connect all points, but not necessarily connecting all the points. Try तो कर सकते हैं, तो smoothness बरकरार रहना चाहिए. मेरे कितने पॉइंट कनेक्ट हुए? सिर्फ 2 ही कनेक्ट हुए. अगर मैं zigzag बनाता तो सारे पॉइंट कनेक्ट तो कर लेता, लेकिन वो ग्राफ प्रॉपर नहीं है. सो 2 चीजें इसमें याद रखनी है. एक तो 6 to 8 रीडिंग्स एटलीस्ट, 10 रीडिंग्स वन इज ऑब्वियस है. दूसरा एक स्मूथ कर्व व्हिच इज पासिंग थ्रू ऑलमोस्ट ऑल द पॉइंट्स. इसको बोलते हैं इक्वी डिस्टेंट. या सबसे ज्यादा कोशिश रहनी चाहिए कि उनके बीच में से निकल जाए. इस तरह से ग्राफ आना चाहिए, जब भी ग्राफ प्लॉट. So while plotting a graph, 6 to 8 reading generally, and a graph is plotted by drawing a smooth curve, never ever a zigzag curve, passing close to all the points. Which is passing close to all the points, but may not touch all or even several points. हो सकता है किसी को भी टच ना, ऐसा भी हो सकता है. Next. उसके बाद डेटा एनालिसिस
रिजल्ट्स एनालिसिस, जो सेक्शन उसमें एनालिसिस करना है, इंटरप्रिटेशन करना है डेटा का, बहुत सारा डेटा आपने लिया, एंड एज द डेटा मे नॉट बी deterministic, it may be statistical in nature, so some statistical indices that we brought up, जैसे mean है, variance है, other statistical जो descriptors हैं, उनके माध्यम से you have to analyze the data. और जो टेस्टिंग कंडीशंस हैं, अगर प्रीवियस रिजल्ट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो टेस्टिंग कंडीशंस वही रखी है जो उसने रखी है। उस पेपर में तो मान लीजिए हार्ड टेस्टिंग कंडीशन रखी थी और आपने सॉफ्ट टेस्टिंग कंडीशन रख ली, और फिर कहने मेरा काम तो ज़्यादा अच्छा है। अरे काम तो अच्छा होगा ही जब आपने लेवल प्लेइंग फील्ड तो दिया ही नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड मीन्स उतना ही हार्ड रखो जो टेस्टिंग कंडीशन उस पेपर में अचीव हुई हैं, वही टेस्टिंग कंडीशन यहाँ रख के, या अपने भी पेपर से प्रीवियस पेपर से कंपेयर कर रहे हो तो वही टेस्टिंग कंडीशन रखते हुए अब आपने कंपेरिजन करना अपने पेपर का भी करना। नेक्स्ट, conclusions में you have to conclude and again highlight the novel contributions. Okay, and the leadership would be better served if it is left ushered to peep into the future. So the leadership would be left better served if you are allowing the leadership to peep into the future. Leadership भी आपके साथ झांक के देख सके कि फ्यूचर में क्या हो सकता है। Okay, some future directions have to be given in a future directions section. All right? And जैसे आपने future directions दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी लोग काम करें मैं तो नहीं करूँगा। Nobody debars even you from doing your work on those future directions. आप भी उनमें काम कर सकते हैं subsequently. It's all a matter of energy and perseverance. आप भी उनमें काम कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि future direction दूसरों के लिए ही होती है, ऐसा नोशन नहीं। लास्ट में ये लिखा है मैंने, it's a matter of time as to who takes precedence. It's a matter of, it's a game of exuding energy, creativity and swiftness, nimbleness. जो जल्दी से कर लेगा उसका काम हो जाएगा। Next. Now comes references section. So they are listed in that order in which they are cited. जिस order में cite किया पेपर में उसी में listing करना है references का, to acknowledge the contribution of those papers, those authors. For journal paper, the title, journal name, volume number, issue number, pages, month, year and publication, etc. need to be mentioned. For conference paper, type authors. कॉन्फ्रेंस पेपर का पहले ऑथर आएंगे, फिर टाइटल, कॉन्फ्रेंस नेम, सिटी, कंट्री, वेयर द कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड, देन एनी डीओई नंबर अगर असाइंड है, डिजिटल ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर नंबर अगर असाइंड है वो उसके साथ देना है। पेपर इज हैज बीन पब्लिश्ड इन प्रोसीडिंग्स एंड पेज नंबर्स हैव टू बी मेंशन्ड। सो इफ द सोर्स हैज बीन फेच्ड फ्रॉम वेबसाइट, तो वेबसाइट का यूआरएल दे। एग्जांपल्स में जैसे ये जनरल पेपर है, पहले ऑथर्स आ गए, फिर टाइटल आ गया, फिर नेम ऑफ द जर्नल आया, वॉल्यूम नंबर, पेजेस, फ्रॉम टू, टीपी मींस फ्रॉम टू, दिस इज द ईयर इन व्हिच इट वाज पब्लिश्ड। नेक्स्ट, दिस इज ए कॉन्फ्रेंस पेपर, ऑथर्स, टाइटल, कॉन्फ्रेंस नेम, सिटी, न्यू दिल्ली सिटी, फिर उसका ईयर आ गया। ठीक है, फिर एक और जर्नल पेपर है, फिर एक और जर्नल पेपर आईआईटी टेक्निकल पेपर, और लास्ट में वेबसाइट है उसका जिक्र कर दिया। ठीक है, इस क्लास में। नेक्स्ट, एक्नॉलेजमेंट में बहुत सारा कंट्रीब्यूशन हो सकता है, विच इज मॉनेटरी, विच इज नॉन मॉनेटरी। अगर नॉन मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है तो वो उस लाइन में एक्नॉलेज करना है। कुछ मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन है, जैसे कहीं से ग्रांट मिली है, इक्विपमेंट मिला है, फैसिलिटीज मिली हैं, तो उनको एक्नॉलेज करना। ठीक है, और सम ऑफ द इंस्टीट्यूशंस जैसे सीएसआईओ है, वो ये भी चाहते हैं कि आप हर एक ऑथर का कंट्रीब्यूशन लिखो, इस ऑथर ने क्या करा, इसने क्या करा, इसने क्या करा।
ये भी पूछ जाते हैं। CSIO जैसे ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल सपोर्ट मिली तो उसका जिक्र करना है। और कुछ लोग रेफरीज का भी एक्नॉलेज करते हैं, एनोनिमस रेफरीज, उनको भी उनका नाम तो नहीं पता था, उसको लिख देते हैं थैंक्स टू द एनोनिमस रेफरीज। नेक्स्ट माय कॉशनरी नोट्स हैं यहाँ पे कुछ। A paper can make or mar the reputation of the academician scientist or researcher. बना सकता है और खत्म कर सकता है। अगर आपने हल्के पेपर लिखे तो आपकी रेपुटेशन हल्की हो जाएगी, अगर आपने अच्छे पेपर लिखे हैं तो आपकी रेपुटेशन बढ़िया रहेगी। For some it can mean a major turn in life, for the better or for the worse. ऐसे भी केस देखे गए हैं जहाँ टर्मिनेशन हुई किसी। पंजाब यूनिवर्सिटी में एक टीचर ने, जियोलॉजी डिपार्टमेंट का टीचर था, उसने पेपर लिखा और ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर के पास चला गया। ऑस्ट्रेलियन रिव्यूअर ने पेपर को देख करके ये जज कर लिया कि ये जो बंदा है पेपर लिखने वाला, ये उस एरिया में गया नहीं है, बैठा बैठा लिखता जा रहा है, इसने एक्चुअली जियोलॉजी का वहाँ जाके सर्वे नहीं किया है। तो उसने बैड कमेंट दे दिए और बैड कमेंट इंस्टीट्यूट को दे दिए, पंजाब यूनिवर्सिटी। Ultimately that professor was terminated from class. So this is called plagiarism. So plagiarism से बचना है। Plagiarism का चार्ज बहुत सीरियस होता है, माथे पे दबा भी लग जाता है आपका, और आपको ये जॉब से भी उतार सकता है नीचे। Very dangerous kind of thing. So higher the dictionary of the journal, the better it is to publish as a year also told. And वो जर्नल जो ओवरनाइट पब्लिश करते हैं, या वीक में पब्लिश करते हैं, या मंथ में पब्लिश करते हैं, या पेमेंट लेकर के जल्दी पब्लिश करते हैं, उनमें आप कतई ना रहें, बिल्कुल ना रहें। ये मेरा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है, नेवर गो टू सच जर्नल। ऑल्दो इट्स इंटाइसिंग, थोड़ा इंडूसमेंट तो होती है कि जल्दी पब्लिश हो जाएगा पेपर, तो भेज देते हैं, चलो जल्दी से पब्लिश हमारा नाम हो जाएगा। ऐसा कोई नाम नहीं होता है, पेड जर्नल में कहीं पब्लिश करने से नाम नहीं होता। ओके, और वो ऑथर्स के नाम इंक्लूड करने जिनका कंट्रीब्यूशन ही कोई नहीं है, उससे जो कंट्रीब्यूटिंग ऑथर उनका नाम नीचे गिरता है। वैसे नाम भी कंट्रीब्यूट ना डालें, जिससे ये नुकसान पहुंचेगा। नेक्स्ट, again this is an exercise which you can take a snapshot and do it at your level. इसको कर लेना, because as I told, the seminar happens in exercises. Actually, these exercises are meant for working on yourself, internalization के, बाहर के लिए नहीं है, दिखावे के लिए। इसलिए इनको हम आपसे नहीं मांग रहे, इनके रिजल्ट क्या आपसे नहीं ले रहे। For your own consumption है ये exercises. Okay. So, I think we should. Although there are a couple of more slides which I can just rush through. Because धीरे-धीरे चलते चले, just to have a kind of idea. लेकिन एक टेस्ट लेना है, और टेस्ट के चलते ये इन स्लाइड्स को छोड़ना पड़ेगा। चलिए, ट्रेड्स ऑफ रिसर्चर में बहुत सारी एबिलिटीज है रिसर्चर में, जैसे अनबायस्डनेस। The researcher should not be biased towards one area or inclined toward another area. ऐसा नहीं होना चाहिए कि मुझे इस तरह के रिजल्ट लाने, इस तरह के रिजल्ट नहीं लाने, इस तरह का एटीट्यूड नहीं। जो भी रिजल्ट आए, रिजल्ट तो रिजल्ट। So unbiasedness, which means conducts research with bias and inclination towards none. No bias, no inclination. Let it come, whatever results come up, let it come. So unbiasedness is one of the critical features of a researcher. Besides that, methodicity, replicability, he should be critically examining each piece of evidence available, intellectual curiosity, ruthless curtailing of distractions, or you can say side stopper. घोड़े को देखा आपने, side stopper बांध दिया जाता है, इधर उधर नहीं देखता है, तो बिल्कुल उसी डोमेन में फोकस करता है, इस तरह के एटीट्यूड्स
उसका रिसर्च रिकॉर्ड। नेक्स्ट, प्रूडेंस, एक्सेप्टेंस ऑफ हेल्दी क्रिटिसिज्म। हेल्दी क्रिटिसिज्म को इनवाइट करेगा। You should be doubtful, always doubting as to the veracity of the current status, trying to improve. Okay. Next. These are couple of personality traits. I think we will need to keep a separate section for these discussions because they take quite a time. About 1 hour it requires. Integrity, enrollment, communications, and a couple of more slides are there. We just have a taste. थोड़ा सा वैसे आप इनको देख लो किस तरह चीजें आपके काम की हो सकती हैं। Next. Next. Yes, I have drawn from some literature on nature and spell algorithms and how it can be useful for us in our context as researchers. Next. This also you can examine with regard to your area of work. If you are relying upon feedback and if you are not operating in the open loop mode all the time, is it better for you or the closed loop system is better for you? Just try to see for yourself. Next. Next. This is drawn from neural networks literature, and the intention is to say that the more you apply your brain, the better it is for your strength building. आपका दिमाग और प्रफुल्लित होगा जितना आप अप्लाई करेंगे। These are concrete rules. This is not blah blah. Machine learning tool and this reinforcement learning tool, they are not blah blah. They are based on biological knowledge, which is firmly footed. Next. Next. Again, there's an exercise here which you can take a snapshot and do it. I think we should stop here. So, to sum it up, we have a small test for you, and the certificate of amendments will be made available to those who are able to score some threshold of marks. Earlier, it was considered that 80% marks is the minimum threshold. लेकिन बाद में HOD साहब और आपके डिपार्टमेंट से डिस्कस करके ये पाया इसमें जो बीटेक के स्टूडेंट भी है, और ये बहुत बड़ी बात है कि बीटेक के स्टूडेंट ने इतना झेला, सच के काम से झेला, तो बहुत बड़ी बात है, इनके लिए काफ़ी है। इसलिए हमने वो जो 80% वाला थ्रेशोल्ड है उसको नीचे ला करके 60 पे ले गए। 60% आप लोग तय करने हैं मार्क्स। थोड़ा ध्यान से आंसर कीजिएगा, यही जो बातें सुबह से हुई है उन्हीं में से आपको पिक करना है। MCQ काइंड ऑफ टेस्ट है, सब लोग इसको करेंगे। Thank you, sir. Thank you so much for your precious guidance in the research field. I am sure we people have learned very new things which will be helpful for our bright future. Now I would like to call Poonam Sharma ma'am, coordinator of this event, for a few words.
speaker, Professor Dr. Saini, Dean of School of Engineering and Technology, Dr. Professor Phool Singh, sir, and Head of Department, Dr. Dubey, sir, and faculty members and all participants. Good evening to all. Now, here we all are present on the topic the what, why and how of research. आप लोगों ने अभी मॉर्निंग सेशन एंड इवनिंग सेशन, देयर आर 2 सेशन, बहुत कुछ सीखा होगा। मैं अपना बताऊं तो ये कि मैंने तो बहुत कुछ किया है लर्न। इसके लिए सर का मैं धन्यवाद वर्ड यूज करूँ तो वो बहुत ही कम रहेगा। एंड आल्सो आई लर्न many things about research. I am also pursuing PhD, means I am also researcher with a faculty. Still, I am learn many things. As sir, as I observed and you also observed that, yeah, we feel if anyone criticized us, we said and we thought this person is criticized us and we demoralized, but the person who criticized us more, he is very sporty person for you. जैसे सर ने मुझे बोला, जैसे मैंने अभी एक्सपर्ट लेक्चर है ये ऑर्गेनाइज करवाया, इसमें काफ़ी मिस्टेक्स रही हैं, आई एक्सेप्टेड। एंड जो पॉइंट्स हैं ये नहीं कि हम अगर कुछ काम स्टार्ट करते हैं तभी हमें उस फील्ड में या उस थिंग्स में प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई होती है कि हम लोगों ने क्या वहाँ पे स्किप किया है और क्या वहाँ पे मिस किया है। हमें वही है कि सर ने बताया कि हमें अवेयर होना चाहिए, अगर हमने कुछ वहाँ पे मिस किया है तो हमें वहाँ पे अवेयर होना चाहिए। और मैं यही रखती हूँ कि मैंने जो भी मिस किए हैं, और ऐसा नहीं है कि सर ने क्रिटिसाइज किया कि पूनम ने पूनम ने ऐसी ठीक नहीं करवाई है, ये मेरे लिए बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। आई टेक इट एज ए कॉम्प्लीमेंट। And in next time, I will take care and I will aware about that problems. And thanks to all participants and thank you to our speaker sir. आप सर ने हमें आकर अपनी जो नॉलेज, जो अपना इतना एक्सपीरियंस शेयर किया है, ये हमें कभी बुक्स में नहीं मिलता है। Then thanks to speaker sir from the Department of Electrical Engineering and from the all participants. Thank you. Thank you, madam. Now I would like to request Professor. Now I would like to request HOD of our department, Professor Rajesh Kumar Dubey sir, for facilitate our today's speaker, Professor Saini sir. forgot to invite questions. So if you have any questions, please do ask.
इसीलिए रूल रेगुलेशन के हिसाब से कुछ टाइटल फॉर पीएचडी जो डिसाइड होंगे उस पे वर्ड लिमिट या लेटर लिमिट इसके बारे में आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट आई कैन सर्टेन एंड एश्योर टाइटल इसमें तो मैंने बताया था पेपर्स में तो 2 से 24 और 10 एवरेज है लेकिन पीएचडी डिसर्टेशन टाइटल में कितना वर्ड होना चाहिए आई एम नॉट श्योर बट आई कैन गेट यू दैट यू नो एनी अदर क्वेश्चंस Title of PhD topic. Starting date and maybe last. देखो जैसे मैंने आपको बताया एरिया हैज टू बी डिसाइडेड एरिया टाइटल को तो उसमें प्रॉब्लम रहता है पीएचडी जो ऑर्डिनेंस है प्रॉब्लम रहता है आप एक बार रिवाइज भी कर सकते हो लास्ट में सबमिशन से 6 मंथ्स पहले या कितना पहले का देखना पड़ेगा ऑर्डिनेंस तो उस टाइम क्या टाइटल को स्लाइटली ट्विक कर सकते हो एरिया नहीं I can also maybe slightly tweak कर सकते हो and I think it's 6 months or whatever उसमें है प्रॉब्लम है टाइटल रिवीजन का एक चांस दिया था any questions please some of the students are discussing this is a test don't discuss अपना करना है कर लिया अपना नाम लिख दिया नाम रोल नंबर सबसे ऊपर नाम लिखना है सबके नाम लिखना है सर्टिफिकेट से बनना है रोल नंबर भी लिख डिपार्टमेंट हां रोल नंबर डिपार्टमेंट सर बैठ जाइए तो कलेक्टर वाला हां सर कलेक्टर एक तुम कलेक्टर सर अब बैठ आप कर कलेक्टर डिपार्टमेंट भी लिखवा लेना Thank you, sir. Now we are moving toward the end of the session. For this, I would like to call Head of Department of Electrical Engineering, Professor Rajesh Kumar Dubey, sir, for the vote of thanks. Good afternoon, you all. Respected or today's expert, Prof. Saini sir. Faculty members, राजेश सैनी, ये दूर से हमारे आपके एक्स टीचर भी हैं और स्पेशली ये लेक्चर अटेंड करने के आए, तो इनको भी स्पेशल थैंक्स। कोऑर्डिनेटर पूनम मैडम को बहुत बहुत बधाई भी और थैंक यू। ये इवेंट को ऑर्गेनाइज किया, फर्स्ट इवेंट था इनका, बट लगी रही कोशिश किया, इट इज प्रीटी गुड। ओके, एंड बधाई इसलिए कि इट इज नाउ सक्सेसफुल, इट इज एज्यूम्ड टू बी सक्सेसफुल, जो हमारा टारगेट ऑडियंस था। आज का टॉपिक what, why and how research। सबसे पहला जो वर्ड है what, I think अब मेरा बोलना तो सर के सामने काफी कुछ है, लेकिन सर ने I think दिन भर के लेक्चर में ये अब तक आप लोगों के माइंड में सेट कर दिया होप सो। सॉरी कि मैं बीच में थोड़ा चला गया था, उधर ऑफिस का भी काम मुझे लगा ही रहता है, तो फॉर दैट थिंग। तो दिस व्हाट दिस रिसर्च है क्या, ये तो पहले जो मेरा ओपिनियन है, पहली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं, फिर एग्जाम देते हैं, बीटेक भी आगे एक सेमेस्टर में 6 कोर्सेज एनरोल करते हैं, पढ़ते हैं, सेशनल 1 सेशनल 2, ओके, फिर फाइनल एग्जाम देते हैं, जो भी है 60 to 90% मार्क्स आ जाते हैं, ये से डी ग्रेड तक कुछ आ जाता है, दैट्स वो पास हो जाता है, दैट्स फाइन। करते करते हमारा बीटेक हो जाता है।
बीटेक के फाइनल सेमेस्टर में जाके थोड़ा सा फ्लेवर दिया जाता है रिसर्च का इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट। तो ये रिसर्च नहीं है, ये एकेडमिक्स है। रिसर्च इज लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम एकेडमिक्स। नाम है रिसर्च, मींस ढूंढो और फाइंड आउट। दैट मींस व्हाट आर योर फाइंडिंग्स, डिपेंडिंग ऑन योर एफर्ट व्हाट आर योर फाइंडिंग्स। आपने क्या फाइंड आउट किया, डिपेंडिंग ऑन योर ऑब्जर्वेशन, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट डेटा, डिफरेंट कैलकुलेशंस, आपने क्या फाइंड किया। कुछ काम का नहीं मिला, देन अगेन रिसर्च। जब तक सामने वाले के सेटिस्फैक्टरी लेवल, सामने वाला कौन है, पूरी दुनिया आपके पास, गूगल के हेल्प से पूरा ग्लोब है, उसको कन्विंस करना है। तो दैट व्हाट, इसका आंसर सर के आज एक्सपर्ट लेक्चर में आपको अच्छी तरह मिल गया होगा। एंड व्हाई, तो सर ने तो देखा अभी तक लास्ट मोमेंट तक भी आपको मोटिवेट करते रहे। सर ने लास्ट में भी कहा कि ये तुमने झेला है, जब तक इंटरेस्ट नहीं है तब तक वो झेला है, इसीलिए मोटिवेशन। रिसर्च वर्क अपने आप में झेला है टिल योर मोटिवेशन स्टार्ट। जब मोटिवेशन आ जाता है तो फिर वो इंटरेस्टिंग चीज होता है, फिर वो झेला नहीं रहता। लेकिन यस, एंड तक वो झेला लगता है जब तक आपका अपना मोटिवेशन क्रिएट नहीं। एंड फिर हाउ, करना कैसे, अगर मोटिवेशन डेवलप हो गया तो करना कैसे। इस 3 वर्ड को सर ने नाइसली प्रेजेंट किया इस एक्सपर्ट लेक्चर में, एंड होप सबको बेनिफिट हुआ है। वैसे हम टारगेट कर रहे थे कि पीएचडी स्टूडेंट हमारे टारगेट ऑडियंस होंगे, लेकिन बाद में हमने देखा कि हमारे बीटेक भी अच्छे ऑडियंस हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल ईयर में जो हम थोड़ा सा फ्लेवर देते हैं बच्चों को प्रोजेक्ट के हेल्प से, सब जगह दिया जाता है, तो आईसीटी का ही नॉर्म है। एक प्रोजेक्ट हम आप लोगों से करवाते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हम आप लोगों से देखना चाहते हैं, रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट देखना चाहता है क्या वो रिसर्च वाली जो इंटरेस्ट है अभी तक इसमें क्रिएट हुई है कि नहीं। जो क्रिएट होती है अराउंड 10 to 15% स्टूडेंट्स वो बिना कहे या कहे वो एमएस एमटेक इधर की तरफ, एमएससी की तरफ मूव करते हैं। फिर उसमें से जो फिल्टर आउट होते हैं वो पीएचडी की तरफ मूव करते हैं। तो किस तरह से आपके वो डेवलप हो रहा है इंटरेस्ट रिसर्च का। तो अगर हम बीटेक लेवल पे ये फ्लेवर देते हैं और इस तरह के लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं, तो जो बच्चे थोड़ा सा दिमाग में इंटरेस्ट रखते हैं दे विल गेटिंग मोटिवेटेड। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी काफी मोटिवेशन से मिला होगा, आप लोग सीखने को बहुत कुछ मिला होगा, क्योंकि सर अपने बहुत एक्सपर्ट इस फील्ड के हैं। और यहाँ सर के डायरेक्शन में हम लोग भी आए हुए हैं, और शुरू से ही सर के डायरेक्शन में हम लोग भी काम कर रहे हैं। तो सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि शॉर्ट नोटिस हो ऐसे आप सर को इनवाइट करते हैं, रियली हम्बल की रिक्वेस्ट हमारी जो है एक्सेप्ट करते हैं आप। और आप फर्स्ट ईयर के तालियां पूनम मैडम ने स्पेशली मुझे कहा था कुछ फर्स्ट ईयर के अपने इंटरेस्ट से बच्चे आना चाहते हैं, अपने से तो वेलकम है, तो स्वागत करो, है कि नहीं। अगर वो इंटरेस्ट दिखाना चाहते हैं तो हम लोग हैं इसके लिए, ये एक्सपर्ट लेक्चर उनको फायदा करेगा, ठीक है। तो एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट सारे हमारे ऑडियंस को बहुत बहुत, हमारे प्यारे बच्चे बहुत बहुत धन्यवाद। और सर के एक्सपर्ट लेक्चर से हमेशा गाइडेंस के लिए हमारे पास अवेलेबल रहते हैं और हमें हमेशा गाइड करते रहते हैं। तो एनी अदर थिंग्स आगे भी हम इसका प्लान लॉन्ग टर्म में करते रहेंगे, ठीक है। लंबा सेशन, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। Thanks to all. Certificate will be mailed on your email, and all the participants participating and having attendance certificate will be mailed on your email. And this certificate will be mailed in a week, and all the participants may leave. Bye. मैं नहीं दिख रही ऊपर गई। Thank you so much for. Thank you. आजा इनको मिलेगा। Sorry, dear sir.